that. We'll start the class in 5 minutes. I need to upload a file here. Okay, let me see if I can. On urban morphology. It's an important topic, conceptual topic. Just uploading the questions. If there are any doubts, please ask. We're talking about settlement geography, and today we'll be using something on urban morphology. It's an important topic, conceptual topic. So urban morphology. Chavi is saying, good evening, sir. This is my first optional class. Can I continue from here or should I wait? So Chavi, the new course begins on 2nd of June. You should start from there. And in this course, the first lecture, go to this course, my profile of this course called Master Stroke Course on Geography Paper 1. Please attend the first lecture, which is course orientation and blueprint. That will help you. If you start from here, it will be a challenge because we are just completing the course over here. It might be a little difficult for you. Okay, let me upload it. Others, any question? We are dealing with a topic called urban morphology. The pen seems to be working. All is going good. I've given feedback on the submissions which were there. So I would want you to have a look at that also. On the World Trade, on the Telegram group, I'm still waiting for your submissions. Get that? Actually, so nothing else on the group. And some of you were writing the test also today. The offline test, how has that test been? So Nilni, aapne wo test likha hai. So how has your experience been? How was the experience of students at the center who were writing the test? If you can share with others also, they will also be inspired. Kya chal raha hai? Any other who gave the test today? Nilni saying sir, badhiya tha, pehli baar tha. Okay, good. You got an experience of the test and the pressure is also there. So Saurabh ne kaha, I gave it online. Chaliye, aapne online diya. Offline would have been, like a challenge. So next test, which is going to happen, Unacademy will be conducting that. Make sure you go for the offline experience. Make sure you do that. Are we okay? So today we are going to talk about urban morphology. Before urban morphology is what lies within the city. We'll also be doing with something called as city region. What is city region? Urban morphology. What is urban sprawl, conurbation? ये सब हमने बातें की हैं. But I have used these terms, so we will be doing that also. Is everyone okay? So today the intention is to complete the syllabus of settlement geography. This will be our 4th class, and I have created an extra session. If you were not able to attend this session live, I know some of you had commitments on Sunday, so make sure you do that. One more request to all of you. I was facing some issues with my laptop, so that is why I was not able to upload files in between. So in the morning, I have made sure that all the economic geography files were uploaded. We used it in the class also. Now I would want you to check your settlement geography also. Remember, we did functional classification of towns. That has been uploaded. Whatever I'm going to do urban morphology, that has also been uploaded. So I just want everyone who's listening to me, whether live or recorded,
Your full support remains. One is class discussions, class dictations. Apart from that, your material has also been uploaded on the update section. I would want you to have a look at that. Is everyone okay? तो जरा देख लेंगे और कोशिश ये है कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं सेटलमेंट के उन्हें खत्म किया जाए. आई एम श्योर यू लाइक द मॉडल इन द डे, वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल. उसने कुछ आपको डायग्राम एंड बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर किया. यस, सिमिलरली वी विल बी डूइंग अनदर मॉडल टुमारो. सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज अबाउट रिसोर्सेज एंड मॉडल्स, दे विल कीप ऑन कमिंग. So that's an interesting area. The settlement geography is a little on the theoretical part, and I've already requested you कि इसको जब आप क्लास कर लेते हैं, when you're done with the class, make sure you revise with the handouts which I have given. For the books, what books will be there? So first line of attack for the books has always been NCERT class 11th and 12th. NCERT class 11th and 12th human geography, topics on population and settlement geography. अच्छा दिया हुआ, basic है, easy. Once you're done with that, you can try your geography made simple part 2. Geography made simple part 2 वो भी संभव है. So the books are clear to you. The material is clear to you. It has been uploaded also. It has been discussed also. So आज हम क्या करने वाले हैं? Let me talk about the topics. We will be talking about city region. City region, इसी को metropolitan region भी कहेंगे. We look at something called as conurbations. Conurbation means continued urbanization. Short form for this, continued urbanization. We'll also look at something called as urban sprawl. किस तरह से urban areas spread out uncontrollably, that is called urban sprawl. And then we will go into urban morphology. We'll also look at the famous models given by Burgess, Ullmann, Hoyt. तो ये सारे मॉडल आपके पास आने वाले हैं. Is everyone okay? So ये सिलेबस में है. Now these things are theoretical. So generally for a beginner who's not initiated into this, तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज होता है. इसमें मैं टाइप्स ऑफ सिटीज में भी आज मैं आपको पोस्ट मॉडर्न सिटीज के बारे में भी बताऊंगा. Cities included in this. So this is the intention of the class which we have today. This is the final class, fourth, and the final class of settlement. Yes. Are we clear about the agenda? चलिए, तो पहला क्या करते हैं? Let us talk about city region. What is city region? We're going to talk about this. So city region can also be called as, एक अच्छा सा वो दे रहा हूँ idea which will help you, sphere of influence. This will help you understand many things. इसके बहुत सारे नाम होते हैं. This can also be called as complementary area. Complementary area. Scandinavian people call it as umland. They call it umland. US में इसको hinterland भी कहा जाता है. Hinterland. So what is this concept called as city region? So I think the first one which I have written in the bracket is a better one where you can understand what is it. Sphere of influence. So there is a city. Up to what point? How far is the influence of the city felt? Do we get that? I am very sure that if you are living in a city, for various functions of a city, people from outside your city would come to visit that. One function which I think most of you can relate, and if your city has a good university, is education. You will see that if you live in big cities in India with prominent universities, you will find that many people come from various areas outside the city to avail that service. Okay? A similar thing can also be seen in the form of healthcare. अगर आपकी सिटी में कोई खास हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और समथिंग स्टेट ऑफ द आर्ट in terms of healthcare is there, an important medical college is there, so you will find that people from far and wide would be coming and visiting your city. That is the sphere of influence of that city. Do we get that? और मुझे कई बार ये भी लगता है कि सोशियो कल्चरल भी एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है. सोशियो कल्चरल. So if you have a place which is very, very significant for a particular religion, a pilgrimage center, a center where many devotees come and visit, or these days even the modern day Baba ashram, so there will be people who will be coming to visit that. That is called socio-cultural. आपकी सिटी में एक बहुत बड़ा मेला लगता है. A very big fair happens, very, very important event happens. जैसे पुष्कर का मेला लगता है. Something of that sort if it is happening, or some major event, international film festival is happening in some city in Goa. Yes, no? So people would specially travel to that city to avail that socio-cultural event. Do we get that? So तीन चीजों में people from outside coming over there, can I say city has its influence far beyond that also. तो उस एरिया को जहां तक सिटी का प्रभाव दिखता है, the point up to which the city's influence can be felt is called its sphere of influence. Do we get that? I want to tell you
that if there is a legal dispute in which you are involved, you might go to a district court. Yes, the district court does not rule in your favor, and it says that if you want, you can appeal in the high court. So tell me, high court is not there in every city. Yes or no? So the city having a high court, is having its sphere of influence bigger than the smaller district. Yes or no? So you went to the high court, and high court also you lost the battle. You lost the case. You decide to go and appeal in the Supreme Court. Now, obviously, Supreme Court is nowhere except one in India, so you'll have to come to Delhi. So if you ask me legally, Delhi has the widest sphere of influence. Do we agree or not? Do we agree or not? मैं जहां सुप्रीम कोर्ट होगा वहां पर ही सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी को भी अप्रोच करना है, anyone who wants to approach Supreme Court will have to, come to Delhi. So sphere of influence is that. A city having a high court will have its sphere of influence, but sphere of influence that would be different. So can I say politico administrative judicial sphere of influence? हो सकता है. True. Now I also want to tell you that sphere of influence. So I want to buy a bike. I have a bike showroom in Delhi. I have a bike showroom in Gurgaon. I have a bike showroom in Noida. I have a bike showroom in Faridabad. Now these are all big cities in the Delhi NCR region. Where would I go? The problem is that the bike is available in all 4 cities. So do they have sphere of influence? They don't have it. Or they have it, and everyone is having the same sphere of influence. So in terms of Supreme Court, certain goods and services, a city will have a dominance. But can there be a zone where the city can have competition also? So city regions are regions around a city. This is the city center. The region around which, up to which, city's influence can be felt. उसे क्या कहेंगे? City region. अब इसमें there might be some area where no other city competes with it. What is this? This is a zone of dominance. My influence is there and my dominance is there. But here can be the zone of influence of another city also. True? Possible? Is everyone with me on that? So 4 cities. 1, 2, 3, 4, and 5. Can I say there are zones of competition and zones of dominance? Can I say competition zone? Because other city also is available, is offering the services. True or not? Did you understand city region or not? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? If you have doubts, I will make a graph also. So let us take 2 cities and you keep drawing that. Please draw this. Whatever I have drawn, please draw this. Purvi is saying stuck. All others, is the audio video fine? Purvi, please refresh. Quickly draw it. Everyone, quickly draw it. So keep drawing with me so that we are not left behind. So everyone, this is city A. This is city B. Okay. City A and city B both have a school. Okay, both have a school. So people who want to go to school, number 1 is education. Most people who live in city B, they prefer to come to B only. And people who live in A, they will go for A only. Yes or no? So if you live in city A, where would you try to get education? City A or city B? So obviously city A. Okay. But if you are far away from city A, will less number of people will have a tendency to go to that school or not? True. So maximum number of students want to go to school city A, but as the distance from city A increases, the number of students willing to travel to city A is less. Is everyone okay? Cut off point है यहाँ तक के लोग, up to this point, students are traveling to the nearest city to go and attend that school. If you were living in city A or B, walking distance. Otherwise, people have maybe bicycle, and further you go, maybe school buses. Yes or no? So can I say the number of students willing to travel to city A or city B will reduce as the distance increases? Is everyone okay? इसको क्या कहा जाता है? Distance decay. Do you agree? What will happen to the students who are in between? Where will they go? Quickly, everyone, where will they go? So they are not willing to travel this far. वो वहीं के local school में पढ़ेंगे? True or not? After a point, they will study in the local school. City is a dream for them.
City is a dream for them. Is everyone okay? Now let's go for second, healthcare. Healthcare. Do we get that? Will the distance reduce here also? Will the distance reduce or not? Everyone. True. So healthcare also. This is the second service. Now I have the last service, which is the trade service. Traders are traveling, no? Traders are traveling, vegetables, fruits, clothes, everything. So traders are traveling. So these traders who are working in city A, maximum number will be trading in city A. But as the distance from city A increases, will the number reduce or not, everyone? True. Will the number of city B people also reduce? Initially, they will be trading, but then it will reduce or not? Is everyone okay? True. What is the sphere of influence? What is the sphere of influence of city A? Can I say this? If this is point A, if this is point B, if this is point C, if this is point D, E, and F, what is the sphere of influence of city A? Do you agree? AD. AD. What is the sphere of dominance for city A? Is everyone okay? AB. Because only people from city A are there. Acha, what will define the size of the sphere of influence? Can you say number of goods and services? Number of goods and services. Can I say legal services could have been one, and in that Delhi will cover entire India? True or not? Is everyone okay? What is the sphere of influence of city B? जल्दी से बताइए. Sphere of influence of city B. Can I say BF? Sphere of influence of city B. What is the zone of dominance of city B? Dominance, or rather than sphere, I can even call it zone of dominance. Zone of dominance, can I call it? This also I'm calling it zone of dominance. Can anyone tell me which one is zone of competition? Which one is zone of competition where people from both the cities are traveling and competing with each other? Can I call this as zone of competition? Everyone with me on this? Now, I haven't told you anything about sphere of influence other than I've talked about it, but do the diagrams make it clear for us or not? If the concept is clear, if your notes are like this on one page and you've added some snippets on that, easy to remember. The terms umland, the term hinterland, the term complementary area, the term sphere of influence, they're all same. They're all same, and cities are competing, cities are collaborating, and cities have their dominance also. Do we get that? In terms of what? City functions. Remember, every settlement has a function to perform. So city is offering these services: healthcare, education, and trade. Is everyone with me on this? Are we done? Let's write down something then, if you have understood. Please write down: urban centers are focal points. Urban centers are focal points. Urban centers are focal points of urbanization in an area. However, cities must not be seen as urban islands. Cities must not be seen as urban islands, isolated from their surrounding. Isolated from their surroundings. In fact, cities and their surroundings are interlinked and interdependent. A city must be seen as a functional nucleus. City must be seen as a functional nucleus around which its urban influences radiate out. Around which
its urban influences radiate out, creating its well-defined city region, or the umland, It may be defined as the surrounding area of an urban center, in bracket town or city, which is linked functionally in bracket socio-cultural, economic, politico-administrative, which is linked functionally in bracket socio-cultural, economic, politico-administrative with the urban center. ठीक है, तो सिटी रीजन समझ में आ गया, सराउंडिंग एरिया है which is linked functionally with the urban center. In bracket you can write down an immediate tributary area 50 to 80 kilometers on all sides of central city. Everyone, one was concept, understanding the concept, and second is being able to give it words. Do you realize that? And this dictation is just to tell you that merely understanding is not enough, उसको कुछ words में भी डालना होता है. Get that habit. ठीक है, next paragraph, please write down. Though city region is a common term, however, one sees many synonymous terms. City region is a common term, however, one sees many synonymous terms like urban field, tributary area, sphere of influence, urban tracts, etc. being used to denote city region. To denote city region, ये terms भी use की जाती हैं. Get that? In Scandinavian countries, the term umland is used, while in USA the term metropolitan region is used for denoting the city region. ठीक है, पेपर 1 के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, we are doing in the context of paper 1. That is why I have used these terms so that you can very well do that. Okay, that. So now everyone, please understand one more thing. Is city region a finite, well-defined thing, or can it change with time? Finite, well-defined thing, or can it change with time? Hill is saying it can change. How will it change? People were saying it will change. The sphere of influence will change. What will cause that change? If you're saying it will change, what will cause that change? So the answer is, as the functional specialization of the city increases, city upgrade हो गई, उसमें high court आ गया, big university comes, so many things. As the city's functions evolve, as they develop, as they diversify, more and more people will be coming to that city. True or not? So government of India opening many medical colleges or engineering colleges. पहले नहीं था वहाँ पर, but we are doing that. Yes, the government of India had the policy of setting up, big PSUs in backward areas. Say, for example, steel plant.
Yes, Rourkela steel plant, Bokaro steel plant, Bhilai steel plant. So when you create such places, what will happen? There will be more movement of people, and will there be a better sphere of influence or not? So that is what we are talking about. The sphere of influence is a dynamic thing, and structurally speaking, it has two parts. One is what? One is a zone of competition, other is zone of dominance. Okay, that. So please write down. City regions. Please write down. Since the cities keep on evolving with time, diversifying into newer functions, and specialization. Thus, city region is also dynamic. As the functionality of the city gets enhanced, so does the as the functionality of the cities gets enhanced, so does the size of the city region. Which expands considerably. Structurally speaking, cities' sphere of influence can be divided into two parts. City's sphere of influence can be divided into two parts on account of the interference of the neighboring city regions. The two zones are called the zone of dominance and the zone of competition. As shown in the graph. तो ग्राफ जहां भी आपने बनाया है वो वहां पर लिख देना. जो भी बनाया है, what we will do, we will write that. Is everyone okay? So please repeat. So does the. I don't know मैंने क्या बोला था. I said as the city's functionality gets enhanced, so does the sphere of influence, or so does the size of sphere of influence, which gets bigger. ऐसा ही कुछ था, है ना खुशी? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसा ही कुछ बोला था, और अपने वाक्य में लिखना है. आप लिख लीजिए. I hope I have explained before telling you anything, so you can fill up the gaps. ठीक है? I said as the city expands, so does as the functionality enhances, so does the city region, the size increases. Everyone okay? अच्छा, एक तो हुआ सिटी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. That's a good thing because more functionality. Other is that the city is physically growing. So Pragati has written that sentence for you, Kushi. So does the size of city region, which expands considerably. मैंने भी ऐसे कुछ बताया था. So more or less the same thing. So what is happening is, everyone, this is the city. ये मेरी city. This is city. True. This is my sphere of influence or city region. Is everyone okay? And I'm surrounding by what? Rural area. True or not? Another city. Another sphere of influence. Possible? I hope you can understand that city need not be in the center. So sphere of influence area. Everyone, when I put question mark X, Y, and Z, what kind of regions are these? Urban or rural? X, Y, and Z. If I ask you point X, point Y, and point Z, where are they? Are they urban or rural? So they are city region. So people are coming to the city to avail. So they are very much connected to the city. So sometimes city region can also be the municipal boundary.
but sometimes that boundary may not be the municipal boundary, that may be there. So can I say these can be part of the city also? They can be on the periphery of it. तो इनको हम peri-urban भी कह सकते हैं. Is everyone okay with? Can these be called as peri-urban? Can I use the term peri-urban over here? Get that? और बाकी तो पक्का rural है. So can I say peri-urban can also be a boundary between rural on one side, urban on other side? तो ये जो zone of transition, remember fronts between cold front and warm front, this is called rural urban fringe. Is everyone okay? Rural urban fringe. Okay. And this thing, what has happened, everyone, please pay attention. Urban areas and this sphere of influence has started overlapping. Yes or no? So this whole area has got urbanized in a way. What is that called as? उसको क्या बोलेंगे? Conurbation. समझ में आया? What is the fringe? जल्दी बताइए. What is a fringe? Everyone, what is a fringe? The transition zone between rural and urban area. That is a fringe. What is conurbation? Short form of? Conurbation is a short form of continued urbanization, where many urban sphere of influences have overlapped with each other. Is everyone okay? And initially the cities were separate, but what happened was the city kept on growing. Idhar grow kar raha hai, ye bhi grow kar raha hai, and soon we found that it overlapped. This whole area has got become urbanized. So this expansion of city outward is a good thing or a bad thing? A city expanding outwards, good thing or a bad thing? City expanding outwards. So well, if you wanted the city to expand, if you planned it to expand in a particular way, it is very good. That is called urban growth. But if it is happening uncontrolled, without you wanting it, people migrating and not getting a chance to live in the city, haphazardly occupying that area, तो उसको क्या कहते हैं? Urban sprawl. Sprawl का मतलब क्या होता है? फैलना बिना इच्छा के. We did not want it to spread, but it is spreading in an unhealthy manner, in a haphazard manner, in an unplanned manner, in an unregulated manner. So probably city limits, city laws, city administration is not serving them, so they can do whatever they are doing. Yes or no? So will the buildings which are created because of urban sprawl, will they comply with the building codes? Will they comply with the building codes? Will they comply with the safety codes? Will they offer the people the basic amenities? No. Still people are living over there. Why? Because they get work from the city, they are in the sphere of influence, they cannot afford to live in the city. True or not? यहीं पर क्या बनेंगे? यहाँ पे क्या बनेंगे जल्दी बताओ? स्लम्स बनेंगे. समझ में आया स्लम की कहानी क्या होती है? स्प्रॉल की वजह से स्लम बनता है, और उसको क्या कहा जाता है? एक और चीज कहा जाता है, स्क्वाटर सेटलमेंट. स्क्वाटर सेटलमेंट. एक तो स्लम हो गया. स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ी. यस नो? स्लम इज दैट. एंड स्क्वाटर सेटलमेंट, व्हाट इज स्क्वाटर सेटलमेंट? व्हाट इज स्क्वाट? स्क्वाट मतलब जाके बैठना, कहीं पर जाकर घुटने के बल बैठ गया. स्क्वाटिंग. यू आर स्क्वाटिंग ओवर देयर एंड यू रिफ्यूज टू गो अवे. सो आप इलीगली गवर्नमेंट लैंड पे जाके कब्जा करके बैठ गए and you develop a colony over there. That's also illegal. Slum is also illegal. Or you go on government land and acquire it. You are squatter settlement. समझ में आ गया? What is slum? What is squatter settlement? And how are they connected to urban sprawl? Sir, then slum should be at the fringe, but in most cases slum is कहाँ पर है? क्या बता रहा है कुछ? Is in the middle of the country. So I'm sure मधुकर आपने थोड़ा गलत लिखा, middle of the city लिखा. Tell me one thing, मधुकर. Slum तो कहीं भी हो सकता है. Slum क्या है? Illegal, haphazard urbanization. So there is a factory. Factory has labor. Labor तो आ गए. Factory was not looking at their welfare. It has not promised them accommodation. So where does the factory worker live? Factory worker कहाँ पे रहेगा? उधर ही रहता है. Slum बन गया. So he will not live on the fringe. कि fringe से चल के आऊँगा, वहीं पर होगा. Now let's talk about Delhi NCR and even Mumbai, even big cities, Kolkata, Chennai, and Bangalore. So construction happening, huge buildings and all that. You need maybe hundreds, thousands of laborers. So in Delhi right now, वो जो विस्टा प्रोग्राम चल रहा है, तो विस्टा जो बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट का जो एक्सटेंशन बन रहा है, so उसमें हजारों मजदूर हैं. Where are the laborer coming from? Are they living on the fringe of Delhi? Every day they board the metro train. Every day they pay 50 to 100 rupees for travel. Do you think that is happening? No. The contractor makes them live on the site itself. True or not? Construction labor कहाँ पे रहता है? उसी साइट पे रहता है कि नहीं रहता है? Now there are hundreds and thousands in number. What will happen? अब साइट पे सब जगह तो नहीं रह सकता, and site will take time to develop. So does he allow them to have a small squatter settlement and slum in the vicinity? True or not? True. So है तो क्या करें? They will live over there. In fact, they feel cheated that when the project is over, the builder says, "Get lost. I don't want to see your face." In urban areas, I've seen so much of labor saying and feeling that we have built this city,
and they don't acknowledge us. True or not? Purvi is saying if city expand, then fringe will also change. And what was fringe yesterday, today comes in the center. Yes, sir. वो भी हो सकता है. So I have a huge park next to my house. It's a massive park. It's a massive park. Get that? So people go for their morning walk and all that, and there are houses around this. So there are houses. Get that? Now I have seen in the park some wires going on the walk track. I can see that. I was aware that these wires are there. Now these wires have gone in the park and then they have gone into the street light. Is everyone okay? So unfortunately unplanned, but street light is there. So on the street light, these wires are going. Now I want to tell you, there are unauthorized small tent wala workers who have encroached upon this. ये यहाँ पर इन्होंने अपना टेंट डाला हुआ है, probably some wall. Okay, थोड़ा सा wall करेंगे ऊपर पॉलिथीन एंड ऑल दैट. छोटे बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पता नहीं कहाँ से वायर भी ले लिया है, थोड़ा पानी भी आता है, और यहाँ से इसी वायर से some electricity is also coming. Is everyone okay? Do we get that? So what we urban dwellers do, हम लोग यहाँ पर walk करते हैं. We are walking over here, and it's a huge park. So people are walking, and these people are living over there. Nobody can regulate them, whatever we are looking at. So one day I was walking over here. And a woman came out, and probably she had to wash clothes or to brush or something, and it was rain or something. So she had some clothes and she decided to put them on the railing of the park. The moment she put it on the railing of the park, she got current, and she's there and she's shaking. She is shaking. Nobody knows what is happening. Someone came to help her, and I was just walking over here. And I shouted. वो कह रहा है, like he's shouting out saying something, क्या हो रहा है something. I said उसको current लगा है. Don't go near her. So that fellow goes and that fellow also touches her. अब दोनों को current लगा हुआ है. Both of them are there and shaking, and I'm there. So मैं भी इतना ज़्यादा तो अभी कुछ है नहीं. So first thing is I just immediately somehow I was able to locate where the wire is. I looked for a big piece of wood and somehow I was able to separate that. Both of them had fallen down by then. Then I called up that Juggi wala people. Then they came, then they said इनको क्या हो गया? मैंने कहा क्या नहीं हो गया है. And then obviously they are not aware of it. Somebody said इसको पानी पिलाओ, उसको दूध पिलाओ, coconut oil लगाओ, ये वो. I said don't do anything. Go to the hospital. This is a shock case, electric shock. In all probability, these people have sustained burn injuries. So people who do not know what is electrocution, जब बिजली का झटका लगता है तो आपको burn injuries होते हैं. I said they really need treatment right now. They said साहब इतना पैसा किधर से आएगा, हम कहाँ ले जाएंगे and all those things. I said रोना बंद करो. Do not give me this sob story. They need hospital care right now. जहाँ पर भी है सरकारी अस्पताल ढूंढो, पहुंचो. ये मत सोचो कि साहब अब आपका पैसा अरेंज करेंगे, साहब अब आपको कहीं से ले जाएंगे. Whatever I could do, I have done and I have informed you. Please do something about it. कुछ numbers हैं मैं आपको दे रहा हूँ, इनसे contact करिए. Go to the government hospital, take them quickly. Now I am saying, is this a fringe area or right in the middle of the city? Right in the middle of the city. True or not? कौन है ये लोग? These were instrumental in building these houses. They were construction laborers of this sector itself. They decided not to move away. And after that incident happened, yes, we took the case and this was cleared. Totally unhygienic, unsafe, very, very dangerous. True or not? And then I also want to tell you, I am trained in first aid. My career has trained me into first aid. If I see someone meeting an accident, some bleeding incident, some fire, some anything, fracture, मैं सब कुछ deal कर सकता हूँ. Do we get that? Unfortunately, most of us are not trained for that. City disaster management, one of the things which everyone should be taught is first aid. कहीं पर आग लगी हो, कैसे deal करना? Immediately, people should know that. If an injury happens, if fractures happen, if blood loss is happening, what should you do? And if somebody has got current, क्या करना है? So what I'm trying to say here is, urban areas are becoming a challenge. और इनमें से किसी को कोई मतलब नहीं होता है कौन construction करके गया. Where will these people go? True or not? Are they on proper contracts? Paper, black and white? No, they are not. So what is happening? ये कहीं तो जाएगा. अब यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? अब ये जब जाएगा तो ये जाएगा fringe में. Do we get that? They will go to the fringe. So it is very normal that you will find slums right in the middle of the city also. But वो छोटे होते हैं. Think of Dharavi. People who have seen Dharavi जब आप मुंबई enter करते हैं, वो मुंबई के सेंटर में नहीं मिलेगा. Church Gate, if you go to South Mumbai, proper Mumbai, Chhatrapati Shivaji terminus and all that, you will find at night, people sleeping on the roads. People taking drugs and whatever you can think of, all the crimes are also happening over there. But it is not huge numbers, जो कि धारावी में होगा. So fringe will be settled over there. Is everyone okay? पर हाँ ये जरूर है कि ये urban areas में जो धीरे-धीरे यहाँ पर settlement से बनने लग रहे हैं, this is a haphazard expansion of the urban area or not? That is called sprawl.
इनको मैं क्या कहूंगा, ये कौन थे, ये स्क्वाटर्स थे. Unsafe, unhygienic, they are trying to live, they are trying to survive. I would say either find a job or go back to the village. That's better, that's better. फिर यहीं से क्या होगा, शाम को निकलेंगे, कहां पे जाएंगे ये लोग, सिग्नल पर. सिग्नल पर क्या करेंगे, बेगिंग. ये सुनो, यही होने वाला है. फिर इनका क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन. हु विल एक्सप्लॉइट देम, सबसे पहले पुलिस विल एक्सप्लॉइट देम. ट्रू और नॉट. देयर आर ऑर्गेनाइज्ड कार्टल्स. मैं तो बताना चाहता हूं कि बहुत जगह पर ऐसा होता है. इन बिग सिटीज देयर आर गैंग्स where women are generally carrying छोटा बच्चा with them and the whole day begging. आप भी छोटा बच्चा देखकर you will sympathize with them and trust me that छोटा बच्चा is on drugs. उसको ड्रग दिया हुआ है ताकि वो बेचारा रोए नहीं, कुछ नहीं करे. अफीम दी हुई है, वो वैसे पड़ा रहेगा. True or not? बच्चों को भी इंडल्ज करेंगे. There will be a lot of sexual exploitation also in this. So think about this. So I'm not saying that we have to be cruel about it. I'm saying the city has to know its planning. If urban poors are coming, how do we deal with urban poors? To give them a dignified existence, that is also there. And when no is there, so somewhere we have to draw a line also. और ये जो आप देखते हैं, you will see, absolutely strong young boys and girls standing on the signals and begging you. तो आप कुछ नहीं खाया है, ये बस एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, भगवान आपको दुआ देगा और ये करेगा वो करेगा, बरकत देगा, प्लीज ये टिश्यू ले लीजिए, मैंने कुछ खाना नहीं खाया. क्यों, टिश्यू से ही चला रहा है भाई. ट्रू और नॉट. दिस इज वेयर द गवर्नमेंट विल कम. दिस इज वेयर अर्बन पुअर्स के लिए स्कीम्स बनाई जाती है, विद स्कीम्स लाइक महात्मा गांधी नरेगा. बट वहां पे भी रेगुलेट तो करना होगा कि नहीं. We are talking about open defecation free. जब तक ये लोग हैं open defecation free हो सकता है क्या? They don't have house. If they don't have house, where will they go? True or not? True. So Divanshu कहना, yes sir, that is why I never give money to them. Divanshu, एक तो ये हो गया कि you're not giving money to them. I understand. Purvi is saying instead of money I give biscuit. True. So Purvi, they can sell that biscuit back also. उसके भी टाइप होते हैं. वो तो तुम भूल ही जाओ. The idea is, can we support the administration? Can we come up with something and work on that? एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको, if you cannot get rid of this evil, can you engage these children into something better for their future? Social capital यहां पर आता है. That we are into their education. If not education, can we be there into vocationalization, giving them some skills? हो सकता है, possible है. I do agree that there are many people who would not want to work also, because I want to tell you everyone, governments have done really amazing things. Governments ने slums को regularize किया है at many places. They have offered पक्का houses. Yes, they have done slum housing. So a slum dweller, उसको घर भी दिया है. You know what do they do? You tell them, okay, slum खाली करो, we're giving. उनको घर दिया, वो घर बेच के फिर वापस आ जाता है slum पे. उधर से मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं वापस slum पे आ गया. So the issue is not get people out of slums. You and I are not dealing with it. You need to get slums out of people. एक slum mindset हो गया है. Easy things. अब किसी ने कहा बलून, वो जो बलून लेकर आता है, दीदी एक बलून, भैया एक बलून, आपका जोड़ी बनी रहे. जनरली वो किसे ढूंढेगा, जोड़ी वाले को ढूंढेगा कि नहीं. वो भी स्मार्ट है, वो बलून लेकर जोड़ी वाले को ही ढूंढेगा. True. That's what I'm saying. They are also, see, it's like a business. They are also very clear on that. But I'm saying that is not what urbanization was supposed to be. Urbanization was supposed to improve you, give you a better quality of life. It was not there कि भाई किसी तरह से आपका जो है आपको जिंदा रखना है. So that is not what urbanization is about. Is everyone okay with this? So I'm able to scroll up. Let me see if I can scroll up. किसी ने कुछ मैसेज भेजा था. So in real slums are not only slums, they are drivers of economic growth of the region. मधुकर, ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये नया लेकर आए, ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर स्लम ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है तो मधुकर मैं क्या हूं? Who am I? I don't live in slums. I am generating income. True or not? Who is a Uber driver? Yes. What are the companies doing in the cities? What are malls doing in the cities? Well, the slum is the driver of economic growth. दार्शनिक मत बनो. सिटी नीड्स लेबर, और सिटी में अगर कोई स्लम वाला है और उसको वो वहां पर रह रहा है तो ये नहीं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ है. उसी लॉजिक पे चल रहा है. ये जो लॉजिक है ना, मैंने कई बार आपके आंसर सुने हैं, आंसर्स प्रैक्टिकल नहीं है, आंसर में हवाबाजी है. इस्लाम ही तो देश चला रहे हैं. सुनिए, इस्लाम देश नहीं चला रहे. देश चलाने के लिए वी नीड वर्कर, वी नीड लेबर, एंड द प्रॉब्लम इज ये वर्कर और लेबर अपना शहर छोड़कर दे हैव लेफ्ट देयर सिटी एंड दे हैव कम टू अ बिग सिटी wherever their own city could have been a growth engine.
उसको छोड़कर आए। क्यों? क्योंकि उस सिटी में बैठे हुए लोग सिर्फ सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का, उनके पास कोई विजन, कोई एक्शन नहीं। और जब ये यहाँ पर आ जाते हैं बड़े सिटी में, दे सडनली फाइंड अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। साहब जो बोलोगे कर देंगे, अगर बेगिंग बोलोगे तो बेगिंग भी करेंगे। बोला ग्रोथ इंजन है, ये नया लेकर आया कि वो ग्रोथ इंजन है। सुनो, वर्कर्स आर ग्रोथ इंजन एंड देयर इज नो रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग विद वर्कर्स लिविंग विद डिग्निटी। डू वी गेट दैट? तो स्लम में क्यों रहना पड़ता है? आप बताओ, आप दिल्ली आओगे मधुकर तो क्या स्लम में रहोगे? आप क्या स्लम में रहोगे? और अगर आप स्लम में नहीं रहोगे तो क्या आप सिटी के इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन नहीं? इसे हम कहते हैं सुनी सुनाई बातों को पॉइंट बनाना। एब्सोल्युटली एक्चुअली नॉट रेड एनीथिंग ऑन दैट। आप मुझे बताइए, आपने स्लम के बारे में कभी कहीं से फॉर्मली पढ़ा? एनीथिंग दैट यू रेड ऑन स्लम? 2 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, कहां पढ़ा है? इंटरनेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट का पीडीएफ तो पढ़ा होगा। पॉइंट 1 पॉजिटिव्स, पॉइंट 2 नेगेटिव्स, वे फॉरवर्ड। दिस इज द यूथ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सर आई हैव सीन इन यूट्यूब अबाउट मुंबई धारावी। घूम फिर के वही निकला ना, घूम फिर के यूट्यूब ही तो निकला। इसलिए कह रहा हूं भाई, किताब पढ़ लो। ये सुनो, पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, केस स्टडी। 2 साल हो गए, यूट्यूब छोड़ दो चाचा, अब तो छोड़ दो। कब तक यूट्यूब से ही पढ़ोगे? लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इफ यू रेड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फ्रॉम एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड, तो यूट्यूब वाले चंपक को नहीं सुनना पड़ता। ट्रू और नॉट? बट मजा आया। वन चंपक फेलो, देन चंपक मैडम आल्सो केम। मैडम के साथ भी हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सीखा, सर के साथ भी हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सीखा। बट व्हेन द क्वेश्चन ऑन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड केम इन यूपीएससी, बिकॉज़ वी डिड नॉट हैव प्रैक्टिस, दैट इज व्हाई वी डिड नॉट। तो रिक्वेस्ट है यार, आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, बीच में कितनी बार योजना छप गई। योजना ऑन स्पेशल दिस थिंग स्लम्स पे कई बार आया। अच्छा एक बात हटाइए ना, ये तो आप मुझे ऐसे ही बताइए कि हिंदू न्यूज़पेपर पे कितनी बार आ गया होगा अर्बन इश्यूज पर? ट्रू और नॉट? बट वी नेवर रेड इट। हम तो जस्ट क्वेश्चनिंग दैट यार। आप एक बात बताइए, टुमारो अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अ डीएम इज गोइंग टू एडमिनिस्टर हिज डिस्ट्रिक्ट, ओके, यूट्यूब देखकर करेगा? डू यू थिंक सो? और विल ही और शी रीड द डॉक्यूमेंट्स, बी थरो अबाउट इट, व्हाट इज द रियल इशू? करेगा या नहीं करेगा? अपने पटवारी से बात करेगा, अपने तहसीलदार से बात करेगा, गो एंड लुक एट द मैटर, व्हाट इज द मैटर, व्हिच इज द अग्रीव्ड पार्टी, अच्छा दिस इज द इशू, देन इवन टॉक टू द सीनियर्स, सर दिस इज व्हाट आवर डिस्ट्रिक्ट इज प्लानिंग टू डू, व्हाट वी शुड डू एंड ऑल दैट। कैसे बनती है यार? ये धारावी का वीडियो देखकर एक काम करो, यूट्यूब लगा दे, आज डीएम को कुछ करके दिखाना, यूट्यूब यूट्यूब। अच्छा सही, अब मुझे सब समझ में आ गया। सो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन, इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन, प्लीज डू दैट। एक बात बताऊं, इफ यू ओपन द यूट्यूब राइट नाउ, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब पे एटलीस्ट 100 वीडियो मिल जाएंगे, सर एज वेल एज मैम, एसएससी, बैंकिंग, सीएससी, सब मिलेगा या नहीं मिलेगा? यू वॉच 100 वीडियोस, आई एम सेइंग यू वॉच 100 वीडियोस ऑन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एंड डोंट डू एनीथिंग एल्स, डोंट डू एनीथिंग एल्स, जस्ट वॉच देम। एंड आई एम सेइंग गो टू द एग्जामिनेशन, उस दिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन वोंट बी देयर। इंस्टेड इफ यू टेक, वो कौन सी पढ़ रहे हैं आजकल, आरएस अग्रवाल चलती थी हम लोग के टाइम पे, अभी भी वही चल रही है। इफ यू टेक एनी कॉम्पिटिटिव टेक्स्ट बुक और उसमें से 20 क्वेश्चंस बना लो, टेल मी रिजल्ट विल कम और नॉट? ट्रू और नॉट? That's the difference. And I'm saying it from day one. I'm saying it from day one. कि भाई ये वाला मत करो कि सर हमने ना उस पे देखा कि ये तो ड्राइव कर रहे हैं इकोनॉमी को। अरे भाई, कहीं तो वो भी काम कर रहे होंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, उन्हीं स्लम से, through those same slums, lot of illegal activities are also happening. Lot of crime is also happening over there. True or not? They are the dark underbelly of the city. अब प्रॉब्लम ये है, आपके पास वो vocabulary भी नहीं है, dark underbelly of a city. So neither we are language-wise, we are going to leave a lasting impact through our answers, nor our content is authentic. In fact, so many times, someone who's speaking on a YouTube, हो सकता है my language is weak. And I've seen, like many people have very poor language, और लोग उन्हीं को रट के लिख रहे हैं, उनकी गलती इधर भी होती है। एक हमारे यहाँ टीचर है, वो पढ़ाते हैं ऑल माइटी हिमालयाज। सो इंडिया इन द नॉर्थ देयर इज माइटी हिमालयन माउंटेन, वो उसने पढ़ा होगा कभी, लेकिन वो बोलता है उसको ऑल माइटी हिमालयाज है। ऑल माइटी नहीं होता, ऑल माइटी भगवान के लिए होता है। क्या करो, क्लास में, लाइव क्लास में वो ऑल माइटी पढ़ाता है। असिस्टेंट कमांडेंट थे, छोड़कर आ गए। उनका क्लेम टू फेम है कि हम असिस्टेंट कमांडेंट थे, हम छोड़कर आ गए। अब छोड़ के आ गए, आप जानते हैं आसान नहीं है जॉब। ऑल माइटी हिमालयाज पढ़ा रहे। एंड फनी पार्ट इज, स्टूडेंट नोट्स लिखता है और स्टूडेंट भी हर जगह पे ऑल माइटी हिमालयाज लिखता है। ट्रू, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। Same person, assistant commandant, says that Tarai region is generally saturated with water. Why? Because of the shade of Himalayas. हिमालय की छांव पड़ती है। क्या कर ले? कलीग रहे हमारे,
ऑलमाइटी है वो, एंड स्टूडेंट उसे कॉपी करेगा, बोले सर उन्होंने तो ऑलमाइटी बताया था, क्लास में समा बहुत बांधते, और कुछ नहीं होता तो अपने असिस्टेंट कमांडेंट के किससे सुना दो कि फिर यहाँ खतरा था, फिर वहां खतरा था, फिर आसमान से बुलेट आई, फिर ये आया, फिर वो आया, पता नहीं कुछ किया भी था नहीं किया था, किसे पता। ऑलमाइटी है भाई, जैसे हम पढ़ते हैं ऑलमाइटी हिमालय, हमने कहा मास्टर जी के नोट्स लेकर आए हो, ऑलमाइटी का मतलब पता है, ऑलमाइटी हिमालय। बोल रहे सर मैंने यूट्यूब पे देखा सर, दे आर रनिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो आई वांट टू स्पीक प्रो स्लम्स, आई वांट टू स्पीक एंटी स्लम्स। ये सुनो, मैं कह सकता हूँ प्रो स्लम में वो लोग आते हैं, पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू लिव इन द सिटीज, मेन सिटी, बट दे रियली प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेबर टू द सिटी, सो दे आर रनिंग द सिटी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट द सेंटेंस इज करेक्ट, ट्रू ना। और मुझे एंटी स्लम लिखना हो तो मैं एंटी स्लम भी लिख सकता हूँ, दैट दीज आर ए नाइस और दिस इज द कैंसर ऑफ द सिटी, ट्रू, कैन आई डू दैट। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट वी कैन नॉट टेक slum out of the minds of the people. That is why even if we give them proper housing, तो भी वो घर छोड़कर वापस स्लम में आ जाता है, उस घर को बेच के आ जाता है। तो यहाँ ये कह नहीं सर लेकिन आपको बताए थे हम, क्या बताओगे यार, तुमने कौन सा धारावी देखा, तुम गए हो धारावी, तुम अपने शहर से बाहर नहीं निकले हो, तुम तो यूट्यूब पे देखे हो ना यार, धारावी बता रहे हैं यार यूट्यूब पे, चाचा दुनिया सारी देख चुके हैं हम। एक काम करें, उस दिन यूट्यूब पे एग्जाम ना दे दें, छोड़िए ना, मजा आएगा। सो एवरीवन, ये समझ में आ गया सबको। सो रिक्वेस्ट है कि बुक जरूर पढ़ें। आफ्टर दिस होल कन्वर्सेशन आई वांट टू कम टू वन वेरी सिंपल थिंग, that the material being handed out to you, please read that. There is nothing wrong with that. आप स्क्वाटर सेटलमेंट अर्बन स्क्रॉल जानना चाहते हैं, अच्छा बुक है, मेड सिंपल, पढ़ लीजिए। In the morning also I told you that it's an important area, this is an important phase of your life, you should be focusing on it, don't lose things, please strategize. आज अर्बन स्क्रॉल पढ़ा के एक पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा उस पर, ठीक है। और हमेशा from day one I've always said whenever you ask a question in the class, please give the context of it, because every book will have a context. So फिर से बताना चाहूंगा, YouTube let it not be a replacement for the authentic sources of education, authentic sources of language. If you read Hindu newspaper, many people, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी भी मैं मिला था on the day of this thing, sir I like to listen to the commentary on Hindu newspaper, should I really read Hindu newspaper? So I love to hear Hindu newspaper in Bhojpuri, मजा आता है सर, I am able to understand. I'm saying why bother about it? Bhojpuri में actually watch Ravi Kishan, why read Hindu in Bhojpuri भाई, who said? If you really want Hindu, then you must take the Hindu newspaper, the language of it and the understanding of it. भोजपुरी में सुनने से बहुत मजा आता है सर, एकदम जमा के पढ़ाते हैं सर, अबे दही जम जाएगी यार दिमाग। जी सर, आवास योजना में बहुत घर मिले हैं लेकिन सब रेंट पर देते हैं, रेंट मनी का यूज लिक्विड एंड ड्रग्स में करते हैं, और बहुत बार लोगों को समझाया है, वो लोग मानते ही नहीं। सो दैट इज हैपनिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज हैपनिंग। अब हम ये कहते हैं कि दीज आर रनिंग द इकोनॉमी। सर मेरे एक फ्रेंड के पास अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है, वो यूट्यूब के वीडियो देखता है, अनअकैडमी के क्लास लेता ही नहीं है, बोलता है यूट्यूब पर इजी टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल है, आई हैव नो इश्यूज, आई एम सेइंग व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी सिलेबस, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी सिलेबस फॉर 2 years in Bhojpuri when you are going to appear for the examination in English, true or not? What's the point of watching 2 years videos on swimming when you've never even jumped into water? आप बताइए, true or not? और उसके बाद after these 2 years what will this person do? He will open mentorship for IAS, क्योंकि इसको तो सब आता है, and then he will teach almighty Himalayas are the highest peaks of the world. Yes, are you understanding me? Almighty Himalayas are the highest peak. I went to the interview of UPSC, could not get select, but I make you select. If you ask, I explain in Bhojpuri also. तो क्या फायदा यार? What's the point? हाँ, वो भी एक मैसेज आया था जो पूर्वी कह रहे हैं, वो पास नहीं हुए, रोटा मैसेज, दिमाग से यूपीएससी नहीं जा रहा, किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ। ट्रू, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग व्हाई वुड वी नॉट। आज सुबह भी मैंने आपको दिखाया था कि यार इंटरनेट सर्च करना आना चाहिए, अपना पैराग्राफ निकालना आना चाहिए, एंड राइट इट इन योर वर्ड्स, और थोड़ा सा व्हाई डू आई डिक्टेट अ लिटिल बिट सो दैट यू गेट सैंपल्स ऑफ लैंग्वेज। सो रिक्वेस्ट है, अब जो हुआ पास्ट में वो हुआ, दिस इज योर सीरियस अटेम्प्ट, नो कैन यू मेक चेंजेस, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। If you can make changes, please make changes. बाकी आपकी श्रद्धा है, बिल्कुल जैसे लगे हो, कोई दिक्कत नहीं, मजा बहुत आ रहा है, मजा आना चाहिए, ये उम्र है मजे लेने की तो मजे लीजिए। बट मैं फिर कहूंगा गहराइयां इज अ बेटर वे ऑफ एंजॉयिंग योर यूथ रादर देन यहाँ पर आके शाम को सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो है एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अर्बन स्क्रॉल लिख लो जल्दी से।
Urban sprawl. Why am I giving you one paragraph or two paragraphs? So that when you're revising, at least a catalog of syllabus points are there कि हाँ ये भी हमने थोड़ा सा किया है और साथ में कहाँ से पढ़ेंगे, make simple से जरूर कर लीजिए और मेरा मटेरियल भी रहेगा. Please write down. In almost all countries of the world, in almost all countries of the world, cities and towns, in almost all countries of the world, cities and towns are growing at the expense of surrounding agricultural regions. They are growing at the expense of surrounding agricultural regions. So rural settlement, I hope you understand. Often this growth is unplanned and haphazard. Often this growth is unplanned and haphazard, especially in the developing world. Especially in the developing world. This uncontrolled outward growth of the city, this uncontrolled outward growth of the city, leading to its horizontal expansion, leading to its horizontal expansion. City horizontally expand kar rahi, leading to its horizontal expansion, often along transport arteries, is referred to as urban sprawl. So everyone please read this full stop करके इस sentence को करिए, पढ़िए. Have I been able to throw many ideas in a sentence? Horizontal expansion, along transport arteries, haphazard, unplanned, radiating outward. So if you are able to do that in your writing, you need not mug up made simple, but अगर आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा. Get that? तो ये सिटी है, कहने से सिटी रीजन, और इसमें ट्रांसपोर्ट आर्टरीज हैं. एंड व्हाट इज हैपनिंग, इन पे छोटे छोटे पॉकेट्स ग्रो कर रहे हैं, सेटलमेंट्स आर ग्रोइंग. डज इट हैपन अलोंग द ट्रांसपोर्ट आर्टरीज? ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? इनको हम बोलते हैं रिबन सेटलमेंट्स. रिबन सेटलमेंट्स अलोंग द ट्रांसपोर्ट आर्टरी, रिबन की तरह से वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं. ठीक है, इसी को हम सबर्ब्स भी कहते हैं. ये सुनो, सबर्ब्स भी कहते हैं. तो सिटी प्लानर में प्लान सबर्ब्स, मैंने आपको बताया था सबर्ब्स एंड सैटेलाइट टाउन्स. ट्रांसपोर्ट आर्टरी दिया, we give them a road and their suburbs and transport can be done. बट अगर ये यहाँ पर, अगर यहीं पर आप देखें कि सब फिलअप होने लगता है, ये जो गैप है ना, ये गैप जो है, इट स्टार्ट्स फिलिंग अप, अनप्लैन्ड, हैपहैजर्ड. सो ये क्या हो रहा है? इनफिल डेवलपमेंट. एवरीवन, व्हाई एम आई मेकिंग दीस डायग्राम्स? सो दैट यू आर नॉट मैकेनिकली जस्ट लिसनिंग टू अ डिक्टेशन और डिस्कशन, साथ साथ में बना भी रहे और सोच भी रहे कि क्या हो रहा है. इनफिल डेवलपमेंट हो रहा है. सो दैट इज अर्बन स्प्रॉल. सिटी रीजन आपको समझ में आ गया, सिटी का जो कोर है एंड वेयर इट इज गिविंग इट्स सर्विसेज. I don't want the city to grow further, so I create transport arteries. मैं कहता हूँ along them create suburbs, along that you can create a satellite town also. But वो जो gap जो बन रहा है, those gaps are gradually getting filled in an uncontrolled manner, and that infill is called an urban sprawl. Is everyone okay? Are we getting some idea on this? So please write down. In almost all countries of the world, नहीं ये वाला तो हम ये कर चुके हैं. तो urban sprawl कहाँ पे थे यार? Where were we? ये तो मैंने लिखवा दिया आपको. Last what were we writing? जल्दी से बताओ. Quickly. I think I defined urban sprawl is referred to as urban sprawl. So definition khatam ho. So please write down further. Historically, cities have grown outwards. Historically, cities have grown outwards along transport arteries. Through the creation of suburbs in the form of ribbon settlements. और ये these terms are to be used in your answers. Ribbon settlement, infill development, bring that vocabulary. Get that? In the form of ribbon settlements. However, as urbanization continues, soon the suburbs are not able to meet the housing demand of the increased population. As a result, infill development starts happening
starts happening in the gaps, in the gaps, acquiring the form of urban sprawl, acquiring the form of urban sprawl. Urban sprawl often needs to be controlled. Urban sprawl often needs to be controlled within the urban master plans. So countries will make their plan. Urban sprawl needs to be controlled within the urban master plans through instruments like creation of green belts. Remember I talked about that? Creation of green belts. However, in the developing world, mostly in the developing world, mostly the cities lack a master plan. So my cities का बहुत master plan नहीं होता. Mostly the cities lack a well-defined master plan, and as a result, the sprawl becomes uncontrolled. People living in the urban sprawl or living in this sprawling region, are often contributing to the informal economy. So please understand, economy में contribute कर रहे हैं, are often contributing to the informal economy. However, in the long run, the urban sprawl proves to be unsustainable. In the long run क्या होता है? Urban sprawl unsustainable हो जाता है. तो अगर आपने कहीं पे पढ़ा है कि ये इकोनॉमी रन कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी थोड़ा बहुत रन करते हैं, बट इन द लॉन्ग रन दैट इज अनसस्टेनेबल. आई होप यू गेट दैट. इससे रिक्वेस्ट है किताब जरूर पढ़िएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉनर्वेशन. कॉनर्वेशन इज व्हाट? कंटिन्यूड अर्बनाइजेशन. किसने टर्म दी है? सर पैट्रिक गेट्स. If you remember, मैंने आपको बताया था लुइस मम्फर्ड की क्लासिफिकेशन. Lewis Mumford, he was a student of Patrick Gates. Patrick Gates is a big name in settlement geography. So term coined by Patrick Gates. फिर से बता रहा हूँ, optional subject requires depth. Do not just be on the surface. थोड़ी भाषा में सुधार रखें. तो शायद हिस्ट्री में भी, इंडियन हिस्ट्री में भी आता है. देखिए ब्रिटिश है, और अगर सिटी प्लानिंग में कहीं पर इनकी कोई भूमिका रही हो तो शायद उस संदर्भ में आपने पढ़ा होगा पूर्वी. इफ यू हैव रेड इट समवेयर इन द हिस्ट्री, मे बी सम कंट्रीब्यूशन टू द अर्बन प्लानिंग, दैट इज वेयर. ठीक है. तो कॉन्वर्जेशन है क्या? कंटिन्यूड अर्बनाइजेशन. सो एक सिटी है, दूसरा सिटी, तीसरा सिटी, ये बड़ा होता है. फाइनली दिस होल थिंग हैज बीन क्रिएटेड. व्हाट इज दिस? फ्यूजन, coalescence of multiple urban centers into one big one is called conurbation. ठीक है. कहां पर हो सकता है? ये यहीं पर हो गया. अदरवाइज क्या हो सकता है? एक इस तरह अर्बन सेंटर था, ये दैट, अब ये बड़ा हो गया सिटी, ये भी बड़ा हो गया. ट्रू. दिस होल एरिया हैज बिकम वन बिग अर्बन सेंटर. सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अर्बन स्प्रॉल? तो प्लीज अंडरस्टैंड, in this case it is not that because of sprawl the city is expanding. The city actually expanded. The city limits were expanded and they came so close, और बीच में satellite town भी बना दिया, and soon the urbanization engulfed everything. So that is called conurbation, continued urbanization. Do we get that? So ये यहाँ पर है. तो पहले क्या था? सिटी रीजन 1, सिटी रीजन A, सिटी रीजन B, सिटी रीजन C. City region, remember we said sphere of urban influence increases. Now what has happened? Big city region. Is everyone okay? Clear हो गया यहाँ तक? Please write down quickly. Conurbation पे थोड़ा सा लिख लेंगे and then we will move further. The term conurbation signifies continued urbanization. Continued urbanization means no separation by
Rural areas. Remember what separates two urban centers? बीच में rural होता है. So no separation by rural area. It signifies continued urbanization in bracket no separation by rural areas over a given space. Over a given space. It involves the creation of. It involves next sentence. The creation of an extensive BUA. What is BUA? Built up area. It involves the creation of an extensive built up area created by the coalescence. Created by the coalescence. Coalescence क्या होता है? मिल जाना, fusion. Coalescence of once separate contiguous urban settlements. अब ये language थोड़ी सी याद करनी चाहिए. That is what I'm saying. If you are looking at this, you will get more marks. One separate means पहले they were separate. Can you see A, B, and C? They were separate in the past. What do I mean by contiguous? Can anyone tell me what is contiguous? Once separate contiguous urban settlements joined together. What is contiguous? बेटा contiguous means adjacent. अंग्रेजी में शब्द होता है adjacent. Contiguous मतलब पास पास का क्षेत्र. Adjacent to each other. So once separate contiguous urban settlements, when they coalesce together to make a huge built-up area, बहुत बड़ा built-up area, वो कहलाता है conurbation. ठीक है? Please write down next sentence. Development of conurbations has been the most striking. Development of conurbations has been the most striking feature. Has been the most striking feature of urbanization in 20th century across the world. 20th century across the world. Patrick Gates coined this term. Patrick Gates coined this term for the huge city region or town. I'm sorry, the pen is not responding properly. Unable to write. You know, someone who is under the influence of some substance will be writing like this. Sir, क्या लिख रहे हैं यार ये? He's making insects out of it. Used for city region or town aggregates like Greater London. तो लंदन के लिए उन्होंने यूज किया था. Greater London. Where he could see the tentacles of, again problem, tentacles क्या होते हैं? वो octopus के हाथ होते हैं. Tentacles. Where he could see the tentacles of urbanization converging into large urban masses. ठीक है? Next paragraph. Geographers have identified two types of conurbations. दो तरह की होती हैं. Two types of conurbations. पहला क्या होती है? यूनिन्यूक्लियर कॉन्वर्बेशन. और दूसरी क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियर कॉन्वर्बेशन. Uninuclear conurbation is how, what is it? Created by outward growth. Again, problem. Created by outward growth of urbanization from a single nucleus. एक न्यूक्लियस से बाहर. This is the city center. ये उसका छोटा टाउन. So it grows and absorbs each of them. Is everyone okay? Main city, town 1, town 2, town 3. City has consumed all of it. That is uninuclear. एक center से the city and urbanization is expanding. Please see that this is not urban sprawl. Proper urban land use is happening. We are expanding that urban area और बाकी नए नए areas को उसमें include कर रहे हैं. Easy example है London conurbation, the Great London conurbation. Greater London. जैसे दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ऐसे हमारे पास Greater London conurbation है. Conurbation. I also feel Delhi NCR is a good example of this type of a conurbation. Is everyone with me in this? तो एक न्यूक्लियस रेडिएटिंग आउट, दैट इज यूनिन्यूक्लियर. और एग्जांपल भी देना है एग्जाम में, तो प्लीज. व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियर? Polynuclear is an outcome of ribbon urbanization. It is an outcome of ribbon urbanization.
where two or more urban centers along common transport arteries grow and merge with each other. इसका एग्जाम्पल है न्यू इंग्लैंड रीजन, न्यू इंग्लैंड, टोक्यो, योकोहामा, क्या बोलूं, बैंगलोर, हैदराबाद, बैंगलोर, हैदराबाद। तो ये बताइए जल्दी से मुझे, वेयर इज न्यू इंग्लैंड? कैन एनीवन टेल मी वेयर इज न्यू इंग्लैंड? यूएसए। वेरी गुड, अच्छी बात है, पता चला कि न्यू इंग्लैंड नहीं पता है। बॉस्टन टू वॉशिंगटन, दिस इज कॉल्ड द बोवास रीजन। इस सारा का सारा अर्बन हो चुका है। बोवास रीजन, also called as New England, also called as Northeast Seaboard of USA, Northeast Seaboard of USA। और ये इतना बड़ा अर्बन एरिया हो चुका है, this whole area is so big that moment its population crossed 35 million, remember we are million plus city, 10 million city को क्या बोलते हैं? What is 10 million plus city called? Mega city, very good Madhukar. John Gottman called a city with 35 million and above as megalopolis. Will you remember? Megalopolis, not mega city, megalopolis, a term given by John Gottman। इस एरिया को देखकर उन्होंने कहा ये तो मेगालोपोलिस है। डू यू गेट दैट? तो इसमें क्या हुआ है, जितने भी बड़े सेंटर थे वो सब फ्यूज होकर एक बड़ा अर्बन एरिया बन गया है। दिस इज कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड कॉनर्वेशन। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? आर यू विद मी? And why am I drawing these maps though my pen is not properly working? चाइना की सबसे लंबी नदी क्या नाम है? लॉन्गेस्ट रिवर? यांगसी। शंघाई, वुहान, what is this? Shanghai, Wuhan conurbation. Now tell me, with so many examples, with so many diagrams, I'm sure the word conurbation sticks to you. True. So terms megalopolis, conurbation, ये सारी terms के जो भी मतलब है वो हमें समझते जाने हैं। And again saying in optional we need this. Broadly for interest you are watching some video, that's okay, but when you're preparing for the examination be specific. Everyone समझ में आ गया conurbation? यूनिन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, यही चीज जापान में अगर हम देख लें तो जापान का जो आइलैंड है होन्शु आइलैंड, यहाँ पर है टोक्यो, योकोहामा, नहीं टोक्यो यहाँ है, टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, एक्चुअली तो तीन है, टोक्यो, योकोहामा, योकोहामा, कावासाकी। अच्छा, कावासाकी जगह है, तुम तो ऐसे मोटरसाइकिल सोच रहे थे। टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी। इज एवरीवन ओके? परफेक्ट। अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट एरिया है, अर्बन मॉर्फोलॉजी, थ्योरीज आनी है, ये सब आएगा, सीबीडी एंड ऑल दैट। ब्रेक ले ले, टेन मिनट ब्रेक ले ले। आई नीड वन मोर आवर। अब सिर्फ मॉडल्स करेंगे एंड दे आर ऑन स्लाइड्स, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। जो लोग तगड़े लिखते लिखते, बट व्हाट आई हैड टू गिव बिकॉज़ दीस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, थ्योरेटिकल है वो है, तो आई नो थोड़ा सा वो है, आज का दिन काफी लंबा स्ट्रेच कर दिया। सो 10 minutes break, please refresh yourself, and mostly on slides. So I wanted to give these slides so that your content part is there, and definitely content ना बहुत बिखरा हुआ है, it's so divided, you will have a problem, so that is why I collected it. See you in 10 minutes, 20:05.
It's 10 minutes. So sir, what is centrality increase in Ricardian? मतलब कहाँ से लाए हो रिकार्डियन थ्योरी? कहाँ से लेकर आए हो रिकार्डियन थ्योरी? गूगल से लाए हो ना? ऐसा नहीं कि अभी बोला तो जो है लगे हाथ अब सब गूगल कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। वैसे अभी के लिए तो इतना ही बताना चाहूंगा कि जो रिकार्ड है ना, ये रिकार्डो है, ये रिचर्डियन नहीं है जो आप कर रहे हो ना, RECHARD है ना। और सारा हमारे सिलेबस में नहीं होगा। हमारे पास सेंट्रल थ्योरी है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी हमारे पास कौन सी है? ये तो रिकार्डो है ना। हमारे पास सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसकी है? क्रिस्टालर और लॉश की। तो ये थोड़ी कि तुमको बोल दिया तो जो है तुम एकदम दिखा दोगे नहीं सर यूट्यूब नहीं सर, हम तो गूगल भी देख लिए हैं और ये डराओ मत मुझे। सर व्हाट इज सेंट्रलिटी इंक्रीज इन? अब आपको एक फ्रेज मिला ना, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ना कुछ, सर अभी बता दो। क्रिस्टालर और लॉश के संदर्भ में सेंट्रलिटी क्या होता है बताया जाएगा। बट क्योंकि अब आपने रिकार्डो पढ़ ही लिया कहीं से, तो उसके बारे में बता दीजिए मुझे, मैं आपको समझा दूंगा। अब आप यहाँ पर ये कहो सर व्हाट इज रनॉट, कंगना रनौत वाला रनौत थ्योरी ऑफ सिटी में सेंट्रलिटी क्या होती? मुझे क्या पता कंगना रनौत क्या कह रही थी। ऐसे नहीं अंधाधुंध मतलब जोश में आके अब मैं गूगल देख दूंगा, आज मुझे सचिन सर ने बोल दिया कि भाई तुम जो हो बुक से पढ़ो। ये नहीं बोला है, बोला है मेथड इन मैडनेस लाओ एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट दिस रिकार्डियन थ्योरी ऑन सिटी तो वो पैराग्राफ डाल दो ना बच्चे, मैं बता दूंगा। हाँ मैं जरूर आपको क्रिस्टालर और लॉश की सेंट्रल प्लेस थ्योरी जरूर कराऊंगा, ठीक है। शर्मा जी की सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वर्मा जी की सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सोनू मोनू पप्पू की थ्योरी, रनौट की थ्योरी अगर मिल गई तुमको तो अच्छी बात है, तुमको मुबारक, आप नहीं फंस रहे उसमें। देखो मैं शेक्सपियर तक लेकर आया। व्हाट इज सिटी बट द पीपल? विलियम शेक्सपियर ने ऐसा कहा। ये सिटी होती क्या? आप लोग सिटी की बात करें, सिटी ये सिटी वो, सिटी तो उसके लोग डिसाइड करते हैं, है ना। तो बनारस, बनारस के लोगों से, यस। कानपुर ऐसे मशहूर नहीं है, एक कानपुरिया कानपुर को कानपुर बनाता है, बनाता है या नहीं बनाता है? एक इलाहाबादी इलाहाबाद को इलाहाबाद बनाता है, बिहारी बिहार को बिहार बनाता है, और एक मराठी महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाता है, ठीक है। मुंबई को मुंबई कार बनाता है। इट इज द स्पिरिट ऑफ मुंबई दैट मेक्स मुंबई। तो शेक्सपियर ने शायरी ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये देखो सौरभ आई एम बनारसी बट फर्स्ट इंडियन। अरे उसकी बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि सिटी पीपल मेक इट सिटी। ये सुनो, कोलकाता इज नॉट कोलकाता, इट इज द पीपल ऑफ कोलकाता दैट मेक इट कोलकाता। इट इज पीपल ऑफ जयपुर दैट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ जयपुर। ये उनकी बात हो रही, तारीफ कर रहे थे, इसमें देशभक्ति ना दिखाओ, एंटी नेशनल नहीं कह रहा हूं मैं। सर मैं बनारसी हूँ लेकिन पहले मैं भारतीय, वाह बुलाएगा पगले, मोदी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो तुम, फर्स्ट इंडियन तो तुम ही हो, हम सब तो लाइन में पीछे लगे हुए हैं, है कि नहीं मित्रों? सबसे बड़े मित्र तो तुम ही हो, हम तो पीछे हैं। मैं कह रहा था देश में 70 साल से जो हुआ मित्रों अब नहीं होगा। अच्छा परसों कंगना भी आई हुई थी, बहुत बढ़िया यार, और क्या चाहिए। अब की कब आने? अच्छा मैंगो का सीजन आ गया, अक्षय को आना चाहिए, मैंगो इज आउट। अच्छा अभी जुआ केसरी चल रही है ना, व्हेन यू हैव विमल इन माउथ देन यू कांट हैव अदर थिंग्स। आई कैन अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मुंह मसाला भरा हो तो कैसे आम खाएगा बेचारा, चूस के या काट के? पहले मुंह खाली करके वैसे माल बहुत छापा होगा नहीं? सर नहीं बोल रहा था, सॉरी बोला था सर, उसने बोला कि पैसा वापस कर रहा हूं मैं। अच्छा अकाउंट में तो नहीं आना है 15-15 लाख रुपए? मैं कह रहा था पैसा वापस कर रहा हूँ, किसे पता, किसे पता। बोला वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक वो दिखा रहे मैं पैसा वापस कर रहा हूँ। पूर्वी बोलिए सॉरी बोला है, क्लास की बातें लीक होगी। नहीं पूर्वी क्लास की बात नहीं लिखी, पूरे देश ने पकड़ लिया था जुमा केसरी को। तो ये चाचा बहुत बड़ी बकैती कर गए उस बार, तो ही वाज कॉट रेड हैंडेड। जुमा केसरी एंड द होल केसरी पकड़े गए थे चाचा, बड़ी बड़ी बात करके। एंड दिस थिंग नहीं करते सॉरी तो बिग जोक ऑफ द कंट्री कंटिन्यू करते, क्या टेंशन है। अगर इंडियन पीपल कैन मेक देम स्टार्स देन वी आल्सो नो हाउ टू पुल डाउन द स्टार्स। तो तगड़े वाली फजीयत थी यार। बट फिर भी वही है कि जब मुंह में भरा हो ना विमल, आम नहीं काटना चाहिए ना चूसना चाहिए, आम को साइड में रखना चाहिए। स्वस्थ भारत पर बोल रहे थे,
ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड। आई थॉट दिव्यांशु कनाडा के हैं, तो क्या पता उत्तराखंड ना लेता, बट ठीक है, पार्टी के हैं। चलिए आगे बढ़े, आ जाए वापस शेक्सपियर पे। सर ये शेक्सपियर ना ब्रिटिश है, ये भी 70 साल से चोर है, चलो हटा देते हैं। यूपीएससी ने पूछा कि सेटलमेंट ज्योग्राफी is nothing but city in region and city as region, and all the YouTube से पढ़ने वाले बच्चे सबके होश उड़ गए, भाई साहब दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। True. Settlement geography, city in region and city as region. Public, this is very difficult. How can we answer this? No teacher has ever taught. The question is that what is settlement geography? The syllabus of settlement geography is city in region. That means if there is a country is a region. Settlement geography studies where all cities are. Acha, this is a transport artery. They are growing. This is conurbation happening. Urban sprawl is happening over here. Okay, the government has created a new city so that people are, so this is city in a region. But what is city as a region? एक city के अंदर क्या होता है? These are the roads. Here is the airport. Here is the temple. Here is the mosque. Here is the church. Here is the school. This is the green area. This is the office area. This is the center of the city called Central Business District. So A is city in region. B is city as region. क्या मतलब हुआ? Can anyone tell me what my diagram is telling us? What is the meaning of this sentence? Settlement geography is nothing but study of city in region and city as a region. Explain. बच्चों ने कहा भाई साहब ये तो बहुत difficult है. So everyone, I taught you primate city. Was it not a concept, city in region? Rank size rule. Was it not a concept? Conurbation. What was it? City in region. एक बड़े region में how cities are growing. True or not? अभी आपको दिखाया industrial location. In the morning I told you industrial location. How in an isotropic plane industries locate themselves. Yes or no? True. What is city as a region? It is inside city. Can I say intra-city? This is intercity. So settlement geography क्या पढ़ती है? What does settlement geography study? It studies a country and how urbanization has happened within that region. It also studies one city and what all is happening in that city, management, city administration, city traffic, city structure, city infrastructure. ये पढ़ती है. अभी बताओ, was this question difficult? Or if you remember your school days you used to get questions like this in English or Hindi language. इस वाक्य का भावार्थ बताएं. Tell the gist of this sentence. Did we get such questions or not? Now tell me, so many YouTube and Telegram mugged up students went to write this main examination, and in the evening, funny thing is, they came and they said the question was out of syllabus. I am saying, anyone who knows brainstorming, anyone who genuinely believes in what schooling he did, this was the easiest question. भावार्थ बताएं. Settlement geography, बस्ती भूगोल, city in region or city as region होता है. Simplify the given sentence, explain the given sentence, and people say out of syllabus. And the teachers who are dictation notes, sometimes beta it happens that the syllabus से बाहर भी आ जाता है. Is this out of syllabus? अरे this is Shakespeare. इसलिए मैं लेकर आया. What is city but the people? अगर ये पूछ लिया कल question, if a question comes, what is city but the people? भाई साहब walk out from the examination hall. These geography people have gone mad. What question are they asking? In 2021 this happened in GSSA. Everybody was crying. यार ऐसे टॉपिक पूछ लिए. अरे quotable quotes, remember quotable quotes? Metaphors, famous, जो बचपन में हम याद करते थे, idioms and all those, उस पे पूछ लिया, लिखने को बोला. Nobody can write on it. Why? Because they can only mug up things. That is the state of affairs. Tell me, are we looking at creative people running our administration or people who are just going to reproduce whatever was done before them? उनकी इंटेग्रिटी क्या है? उनको करप्ट करने में देर कितनी लगेगी जिनके पास अपना ही कैरेक्टर नहीं. True or not? So I hope my students will have the courage and conviction to read and understand. अब एक बात बताओ, students who are writing in English medium and who have understood Hindi medium, Bhojpuri Hindu news, moment they get this question, उड़ जाएगा कि नहीं? हो कहाँ है रे? City in region, city as region कहाँ रहा है? ये तो सर भोजपुरी में नहीं बताया था. इस city region में city घुसा रहा है और उसमें city में region घुस रहा है. कौन घुस रहा है, कौन निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. अब देखिएगा शाम को सर जब एक्सप्लेन करेंगे ना, तब हमको समझ आएगा.
Chacha, you are in the exam. Samjho, apply this. God gave you this. For what? Such a question लोग छोड़ के आ गए यार. सोचो. This is license to write. City in region, city as region. True or not? So it's like mother in world and mother as world. है ना? अभी मेरे दिमाग में आया. Explain a mother as mother in world or mother as world. ये तो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा सर. भोजपुरी में समझाइए ना, पकड़ लेंगे, दम बुझा लेंगे. अबे जलेगा तब तो बुझाएगा, हम तो जलाए नहीं. So when I went to the college, so there's this student, कितना सवाल बना लिए? And I said, मैं क्यों बनाऊंगा सवाल, मैं तो जवाब बनाऊंगा. नहीं, हम तो 10 बना लिए, मुझे सवाल देते मैं जवाब बनाता हूँ. सर भोजपुरी में बताइएगा तो सर हम बुझा लेंगे. हम तो जलाए नहीं, बुझाएगा कैसे तू? True or not? So all the people who are loving those Bhojpuri interpretations of Hindu newspaper, पहला तो हिंदू never meant what that Bhojpuri fellow is explaining you. हिंदू कभी वो कहना ही नहीं चाहता था. वो चचा को जो समझ में आया वो बता गए, और अब तुम उसको मान के चल रहे हो. And then you reach the examination, and then now you have to write an English sentence, and you're wondering in Bhojpuri में तो लिख पा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं आ रहा. How will I convert? True. फिर क्या करेगा, रटा कुछ भी लिखेगा. Everyone, urban morphology. चले आगे बढ़े. So simple thing, सब खून ही खून कर दिया मैंने. एकदम मैंगो सीजन, काट के खाओ या चूस के खाओ, जैसे खाना है आपकी जो क्या है. जुबान किसी के साथ मत खाना. An important branch of urban geography which is devoted to the internal structure or makeup of a city. Tell me, this definition tells us that this topic is going to be city as region or city in region. Internal structure. City as region or city in a region. So city as region. मधुकर ना समझ पाओगे बालक, तुमसे नहीं हो पाएगा. जितने भी लोग इन रीजन कर रहे हो, इन रीजन ई था रे. अब हम इसका बात कर रहे हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी का बात कर रहे हैं. समझ रहे हैं आप? वो कह रहा है ना, अंदर की बनावट. वो जो अंदर की बनावट होती है वो कहते हैं सिटी एज रीजन. गेटिंग इट? बुझा रहे हैं? अभी तक जो पढ़ा रहे थे सिटी इन रीजन पढ़ा रहे थे, अब क्या पढ़ा रहे हैं? सिटी एज रीजन पढ़ा रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? सिटी एज रीजन. सर थोड़ा स्लो चलिए, बुझा नहीं पा रहे. जला लीजिए, बुझा लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू. इज एवरीवन क्लियर अबाउट ए और बी? सो व्हाट एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट? सिटी एज रीजन. सर ये मदर वाला अभी तक समझ नहीं आया. मजाक कर रहे थे यार, हमसे गलती हो गई. ना बुझाओ ना जलाओ, फालतू है, मन कर दे. Yes, everyone fine on this? So when I'm going to read city in this thing. True. So an important branch of urban geography is devoted to the internal structure. So urban morphology refers to, ध्यान दीजिए, what does it refer to? Physical arrangement of structures in a town. What do I mean by structures in a town? Buildings, government buildings, commercial buildings, residential buildings. Get that? That is structure of town. Patterns of street, building blocks, individual buildings and their different functions, densities and layout. City के अंदर का layout is called city as region. That means my inquiry is the boundary of the city itself. अब मैं city के अंदर पढ़ूंगा, not outside. Is everyone okay? A basic approach in the studies of urban morphology involve mapping and description of patterns. जल्दी से बताओ, मैंने आपको पैटर्न कब पढ़ा है? Have I talked about any patterns in the settlement geography till now? Yes sir, rural patterns. Remember geometries? So that was in a city as region. Do you get that? City as region मतलब city के अंदर की बात करेंगे. City in region means एक बड़े region में many cities की बात करेंगे. We will be talking about many cities in a given region. Then we call it city in region. When we say city as region, that means the outer limits of our inquiry are the city, and we're going to look inside the city. Now understood well, sir? पक्का नहीं बुझा रहे हो क्या? नहीं बुझा रहे हो? ठीक है. Sachin in humans means many human beings. You read me also. Sachin as human, that means I'm not bothered about all others. You're reading what is inside me. City as region means the area of inquiry is the city outer limit, what is inside it. City in region means your area of inquiry is full region, full country, and in that urban area, cities in that. Is everyone okay? So I tried in English, I tried in Bhojpuri. Bengali आती नहीं है और पंजाबी मूड में नहीं हूँ तो चलेगा. If Naidu can understand it, so I'm good. Naidu, thank you for confirming, because I'm sorry, in between I went Hindi and I went whatever. So I am back, and I want to tell you, I do not take Vimal Zuma Kesari. Theories of urban. So we are more interested in theories. So there are this thing. Everyone, whichever city you are. Suppose you are from city X. Everyone, you are from city X. You travel to Pakistan and you reach city Y. India and Pakistan.
Is there any probability of similarity between the two? Is there any probability? If yes, give me a percentage. If yes, give me a percentage. Is there a probability that the cities will have some similarities? Yes or no? And if yes, how much? Madhukar says maybe 30%. Okay, Madhukar, very good. Others? If yes, how much? So it can be Kolkata, Karachi, KK. Kolkata compared to Karachi. Saurabh is saying 30%, 40%. Rakhi is saying 40 to 50%. 40 to 50%. Okay, thank you. Perfect. Okay. If I take you to London, and I take you to New York, and I take you to Tokyo, are these three cities? London, New York, Tokyo. Sir, बहुत मन है sir, जा नहीं पा रहे हैं sir. YouTube पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. But hypothetically, if I take you at these three things, is there a possibility that there will be some similarities? Is there a possibility that there will be some similarities? If yes, what percentage? 70, 50, 50, 50, 60. Perfect. Thank you. If you had said that there is no similarity, then there can be no theory. Remember, theories identify what? Generalization. So there are some people who were not preparing for UPSC, who were geographers, who went and studied different cities, their internal structure, city as a region. And then they tried to compare. They said, okay, London has a parliament. Parliament Thames नदी के किनारे है. उसके बाजू में एक बहुत बड़ा घंटा घर है, big clock tower called Big Ben. और the palace, which is the Westminster Abbey, ठीक है, वो जो वहाँ का पैलेस है, Buckingham Palace, इधर, वो इधर. So the city has a monarch का palace, city has a parliament, city has a river flowing, and city has a big clock tower. I don't know how many of you have traveled to London. जाओगे तो छोड़ के मत आना. It's a beautiful place to watch. There is a new London, there is an old London. Make sure you go to the old London, feel आ जाएगी. But if you go to New London is anything like that. Okay, perfect. Now let me travel to मधुकर बोला पैसा नहीं. मधुकर तेरे पास YouTube है, तू चिंता मत कर, तू देख मेरे भाई, कोई टेंशन. आगे बढ़ो. जहां देखना चाहिए पैसा बचाकर वो है. बट ज्योग्राफी अगर YouTube से पढ़ रहा है तो वो मत कर. ज्योग्राफी के लिए बुक पढ़ ले. और अगर कुछ देखना है या किसी को देखना है, you can see her also. मतलब how people are living over there, वो भी देख सकता है. Everyone pay attention over here. बोला सर दुख ही आ रहा हो रहा है. Write a letter to अक्षय कुमार. Next time कनाडा जा रहे हो तो लेते जाना. क्या दिक्कत है? अपना ही स्टार है. And if you want a cheaper version तो सोनू सूद को लिख देना. तो बैठ के दुखी हो रहा है सर, पैसा नहीं है सर, लंदन कैसे जाऊंगा. लिख देना अगली बार. एंड बेस्ट ना, अगर दोनों ना ले जा रहे हो ना, तो राइट ये वाला लेटर ना बेस्ट है. व्हाट यू डू इज यू राइट अ लेटर criticizing the whole film industry that these are having double standard, these people talk big and they don't mean it and all that. Only you are a genuine person. Dear Kangana, please, I want to go to UK with you. भाई साहब पक्का हिमाचल से यूके तक घुमा के लाएगी लड़की. बस ये कहना है, सब चोर हैं, सब बिके हुए हैं, सब अपना ही भाई बहन जो हैं अपनी टीम बना के बैठे हैं, न्यू कमर के लिए कुछ नहीं है. कंगना, यू आर द ओनली पेट्रियट एंड आई आल्सो बिलीव दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस रिसेंटली. व्हेनेवर यू सेड सेम डेट, सेम. वो नेक्स्ट टाइम मैंने वही मुझे ले जाना प्लीज. भाई साहब पक्का लेके जाएगी. हाँ, वो नेपोटिज्म जो भी है ये पक्का है. ठीक है. सो मधुकर, आई होप वैसे गरीबी वाला नहीं रहेगा. मेरे पास पैसा नहीं, मैंने तो आइडिया दे दे. अच्छे आइडिया नहीं. आई थिंक अक्की विल डू दैट, बट अक्की मेरे कई बार हो जाता है, मतलब पैसे वैसे में इज नॉट वेरी शेयरिंग. सो द सेकंड वन इज सोनू सूद. ठीक है, सोनू सूद राज्यसभा जाने वाला है, तो सोनू सूद कैन बी देयर. एंड अदरवाइज तो दिस थिंग कंगना. आई डोंट थिंक तो कंगना इज लुकिंग एट लोकसभा राज्यसभा. कंगना इज लुकिंग महामहिम. नहीं, कंगना छोटा नहीं सोचती. परफेक्ट. और वो यही सोच रही है या मतलब रिमेंबर शी डिड दैट मूवी क्वीन, कहीं वो लंदन में तो रिप्लेस करने का नहीं सोच रही. यू कैन राइट दैट इन द लेटर. आफ्टर वाचिंग क्वीन आई रियली रियलाइज्ड दैट ब्रिटिश क्वीन शुड बी समवन लाइक यू. भाई साहब मतलब बिजनेस क्लास में फ्लाई करवा देगी लड़की तुम्हें. बता. बोलो आई सॉ क्वीन, आई एम सच अ बिग फैन, आई इवन लव योर हॉर्स राइडिंग ऑन, जो भी आप मनी करने का कर रही थी आप, ब्यूटीफुल, मतलब यू शुड बी द वन. सब तोड़ के. ठीक है. So I want to tell you that after telling you about Britain, and it's beautiful, such London is very beautiful, but I want to tell you the same thing has happened in India. We have a parliament and the river is Yamuna. बहुत जगह पे ब्रिटिशर्स ने क्लॉक टावर्स लगवाए. And our president's estate is what their queen's Buckingham Palace is. मुझे तो similarity दिख गई. True or not? I saw similarity. So what happened was that though it is very difficult to find similarities, every city will have a different country, will have a different understanding. But geographers were able to see that although each city is unique, however, there is a considerable degree of repetition in broad arrangements. And if there is repetition, that can be theory. True or not? Do you understand where did the idea of theory of urban structure come from? That though every city will be unique, there is no reason why, like one should think of comparing, like Shillong with Patna, yes, with Ujjain.
Because those are different areas. Northeast Shillong, those people have a different way of living. People from Patna, different way of living. Patna is absolutely plain and on a river bank, yes. And we are looking at Shillong at a highland, a lot of this, and Ujjain, a very different location that we are talking about. But geographers said that there will be uniqueness, but kuch to repeat hoga. Everyone, will there be a city municipality office or not? Will it be there? Will there be government offices, buildings, will they be there or not? Do they all look the same or not? Will the city also have a marketplace? Famous marketplace hoga. Yes, famous posh area bhi ho sakta hai. Will the city, if it is an education, will it have a university also? So think about it. Either there is Buckingham Palace over there. There is Buckingham Palace, River Thames. In Delhi, President House, President Estate, and Yamuna. In Kolkata, River, as well as Victoria Palace. Yes or no? है या नहीं? So similarity दिखाई दे रही है हमको. Can we see that? Similarities are there. अच्छा, River has a port, Thames has a port, Kolkata also has a port, Yamuna. Yes. So उनके पास भी port है, तो similarity है या नहीं? So this is what they said. Government buildings are everywhere. If you have a transport hub, that will be there. अच्छा, if you don't have a river, do you have a famous railway station? Railway junction होगा, वो तो ब्रिटेन में भी, लंदन में भी. They have a railway junction. Do they have any place for storage, warehousing? Like we have, your cities might have Anaj Mandi. There might be a fruit and vegetable mandi. Possible? So there also they found it. Moment you find this, you are like, yeah, they are similar. Actually, these are the needs of a city. Achha, tell me one thing. Did I not tell you that after Industrial Revolution, urbanization changed? Urbanization became industry oriented. So will the city have an industrial region? Will the city have a residential region? Our cities also have it. Now, when city has industrial region, there will be people who will come there to work. Those can be migrants. Abhi we were talking about slums, but if an industry is there, abhi आपको बताऊं तो मैं जामनगर में आप जाएंगे तो Reliance ने अपनी township बनाई हुई है. Reliance Industries has its own township, so that all the employees, the engineers, the workers, and the managers, everyone lives in that township. Rourkela township steel plant will have its township or not? They said this township is there in UK also. This is in Japan also, Japanese cities also. So wherever you have industry, there are places. Industry will create places for working men. वो भी होगा या नहीं होगा? So when they studied it, they said, yeah, just like science, that if you drop something, it falls down, and that is gravity. We have studied city as region. When we looked inside the city, we found some patterns being repeated. Let us capture those patterns, and they will be called as the urban structures of a city. Is everyone okay? Have I made it clear to you? As a result, number of theories have been formulated which attempt to describe and explain the patterns involved. अब बताओ, जैसे question आया था, when the question came, city as a region. So city as a region means it is a study of the patterns which are often repeated in terms of building block structures, road, and everything in a city. That is city as a region. There are many theories which urban geographers have given. City in a region involves how a landscape gets gradually urbanized. What forces lead to the creation of urban centers and how do they grow over a period of time? City in region, city as a region, clear, and this also clear. पहली theory दी है E.W. Burgess. E.W. Burgess. Who is she? She is a urban sociologist. इनकी थ्योरी का नाम है concentric और zonal theory. Patterns of social area within city of Chicago. Chicago के लिए उन्होंने किया था, and later on it is seen that other countries also have it. The idea is that the city grows outward in concentric zones. The theory represents American cities. So before 1870s, everyone, before 1870s, before Industrial Revolution, can I say before IR? Before IR, people were living in a mixed neighborhood. What is mixed neighborhood? Mixed neighborhood is merchant also, sweet shop also, intermingled with big houses, small houses, सब कुछ था, कोई differentiation नहीं था. So how many of you live in such cities where you are living in your row, there is a shop also? कोई shop भी है. Someone has opened a cyber cafe also. Yes. There is a book shop, there is a kirana shop also. And there is a rich man, he has a haveli also in the same road. Am I talking about Indian cities? So ऐसा था. Before Industrial Revolution, people depending upon their economic capacity had made their houses. People who could not make their ends meet, उन्होंने घर में दुकान खोल दी. True or not? बीच में, if you remember, like around 15 years ago, phone पे हुआ था ना, PCO, STD, ISD. ऐसा लोगों ने अपने घर में खोल दिया, कनेक्शन लेकर बिल लगाया, उससे आप करिए कॉल. Remember, अब तो पुरानी बात होगी. मोबाइल फोन ने रेवोल्यूशन ला दिया. साइबर कैफेज, इंटरनेट कैफे, पीपल वुड गो देयर एंड बैठ के उधर बफर चलता रहेगा. ऐसा नो, स्लोली इट इज बफरिंग, डाउनलोड हो रहा है. और मेरी ये नहीं समझ में आया तुम वो सब डाउनलोड कर ही क्यों लेते जिसमें टाइम लग रहा है? तुम तो पढ़ने गए थे. व्हाई वर यू डाउनलोडिंग दैट? वो भी उधर पब्लिक एरिया में. ऐसा नो. So that's a stupid thing. तो वो अलग ही टाइम था. So what I'm trying to say is that before Industrial Revolution, there was mixed neighborhood. But she says that एक आग लगी उधर, Great Fire, 1871. Great Fire happened in Chicago, and the new Chicago which created it had segregated. So working people separate, industry separate, residential separate, and
He says in the center there is something called as CBD. What is CBD? What is CBD? चतुर्भुज द्विवेदी? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. ये मत सोचना कि देसी नाम है. सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. एक सेंटर में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगी. तो कैसा है देखें इनका मॉडल. सेंटर में रिंग 1. व्हाट इज रिंग 1? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. नो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज. तो एक बात बताइए एवरीवन, दिल्ली में अब राजीव चौक है जहां पे सारे ऑफिस है, ये रात को एकदम खाली हो जाएगा. ट्रू. क्योंकि जो भी ऑफिस गया, इफ यू गो टू मुंबई चर्च गेट, ये सुनो, ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है. बेंगलोर में प्लाजा हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिस एरियाज. ठीक है, आपके शहर में बताओ क्या है कोई ऑफिस एरिया? सरकारी ऑफिस एरिया जिसको दफ्तर भी कहा जाता है. दिल्ली में दफ्तर भी कहते थे उसको. यस, सेक्रेटेरिएट. सेक्रेटेरिएट. आई थिंक बॉम्बे में आप जाएंगे बेस्ट पे लिखा होगा मंत्रालय. मंत्रालय इज दैट. यस, सौरभ कह रहे सर हमारे यहाँ कचहरी है. बिल्कुल सही कह रहे. सो कचहरी, प्लाजा, राजीव चौक, चर्च गेट, सेक्रेटेरिएट, मंत्रालय, विकास भवन रात में खाली हो जाएगा कि नहीं? एब्सोल्युटली एम्प्टी और नॉट. Is anyone allowed to buy land over there and have houses over there? No. Get that? So that is the CBD. CBD में only those commercial works happen. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? If you go to राजीव चौक at night, तो रात में कुछ चर्सी तो मिल जाएंगे आपको. कुछ ना कुछ तो वहां पर कई illegal activities भी कर रहे होते हैं. True or not? So transition zone contains industry and poor quality housing. In migrants of the city first live here. यहाँ पर आपको पता है दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोग निकलकर यहीं पे पहाड़गंज के आसपास, आपने देखा होगा, आपने बहुत से लोग दिल्ली कभी नहीं आए, बट देयर विल बी लॉट ऑफ स्लम वंस हियर और नॉट. सो डज इट आल्सो हैपन इन योर सिटी नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन? इफ द रेलवे स्टेशन इज क्लोज टू द सीबीडी, बहुत से लोग वहीं पर स्लम में टेंट लगा के हैं. तो यही नहीं, शिकागो में ऐसा हुआ. बट वो फैक्ट्री जोन है, वहां पर फैक्ट्रीज भी हैं. तो फैक्ट्री के बाद कौन आएगा? जोन ऑफ वर्किंग मैन. ये लेबर का जो जोन है ना, आई टोल्ड यू देयर वाज वर्किंग क्लास का होगा. ठीक है. Now I want to tell you where is the rich person living. Rich person doesn't live over there. Rich people you will find they will live further outside. वो सिर्फ सिटी में किस लिए जाते हैं? फैक्ट्री में पहुंचे, देखने जाना है. कब जाना है? दिन में एक चक्कर लगाएंगे. So where is the factory? Factory is here. Factory workers are near the factory. मिल मजदूर मिल के आसपास ही रहते हैं. और मिल का मालिक कहाँ पर रहेगा? दूर रहेगा. अपनी गाड़ी में आएगा, चला जाएगा. Yes. Commuter zone. What is commuter zone? जो लोग बाहर से हैं, beyond built up area. इधर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? Remember, people say in migrants who are living on the outskirt, fringe area. फ्रिंज एरिया नहीं, मधुकरी एक्सपैंड नहीं कर रहा है. ये फ्रिंज है, वहीं आकर रुक गए. अभी तो ये सिटी का हाल है. तो उन्होंने कहा सिटी ऐसे ग्रो करता है. Burgess was of the opinion that all cities have this structure. Center में CBD, then the factory region, then the worker region, and then the rich class, and outside on the periphery in the fringe, some people are living over there. मौका मिला तो होगा, नहीं तो इन्हीं के यहाँ पे काम करेंगे ना. Rich people उधर क्या बन गए? आप गार्डनर बन गए, मालिक साहब, इलेक्ट्रीशियन. बन सकता है कि नहीं बन सकता है? True. आप लोग किधर हो? Where do you live, guys? If your father was in the government job, तो उनका ऑफिस तो सेंटर में, तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलते हैं. ये सुनो, गवर्नमेंट हाउसिंग. तो दिल्ली में बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स की हाउसिंग है, उनकी वो हो जाएगी. If your father was in some factory and production, तो आपने देखा होगा उनके भी वर्किंग जोन्स थे. Some of you may have had a chance of living there sometimes. You would have seen railway colonies में भी लोग रहते कि नहीं. And then you will find, the rich people, they are living outside the city. Towards the outside, जहाँ पे बड़ा एरिया, ओपन एरिया है, they can have farm houses, they can have other things. So does it relate? True, थोड़ा सा सच लग रहा है. Is it happening? So moment you find these similarities, you say there must be a theory. Burgess theory. Is everyone okay? But I want to tell you, not all cities are like this. Some similarities are there. Later on, subsequent scholars challenged it. So Burgess का क्या है? सेंटर में क्या आएगा? CBD. दिखाई दे रही बिल्डिंग? Everyone. Can you see सेंटर में पूरा ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, इवन IT वाला और ये सब. उसके बाद क्या है? यहाँ पे फैक्ट्री, देन फैक्ट्री वर्कर, देन ओपन एरिया, और फिर इधर रिच पीपल विल कम. यहाँ पे क्या अंडरवर्ल्ड भी हो जाएगा. सर कहाँ पर? रात में CBD में अंडरवर्ल्ड. लिटिल सिसिली, क्राइम यहीं पर होता है. चाइना टाउन, वाइस, रिमेंबर वाइस, ये जोन ऑफ ट्रांजिशन. ये वर्किंग मैन, ये बेचारे काम करते हैं. अच्छा, उन्होंने देखा वहाँ पे ब्लैक बेल्ट भी है. द पीपल हु आर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो अपना एरिया बना के रहेंगे. इधर मोस्टली ऑफिस वालों का क्या होता है? वर्कर्स का 2 फ्लैट. लेकिन यहाँ पर ब्राइट वेल लिट एरिया, बड़े बड़े बंगलो बनेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, दोस आर गोइंग टू बी देयर. इज एवरीवन ओके? सर हमें क्या करना है? अरे ये स्लाइड है, ये याद करना है. मॉडल बर्जेस ने दिया था, दैट्स ऑल. उसके बारे में बता दिया. वन क्यूनन, अब ये मॉडल आपके साथ नहीं हुआ तो वन क्यूनन को भी हटा देते हैं, ये कंपैरिजन नहीं. लेटर ऑन होइट एंड डेवी, दे चैलेंज्ड बर्जेस आइडिया. दे सेड नहीं, यहाँ पे सेक्टर मॉडल, उनका सब चीज ऐसे नहीं है दैट इट ग्रोज इन रिंग्स.
It does not grow like this. See, we understand there is a CBD. Nowadays, with greater mobility, what has happened is CBD has a road. CBD has a road. So you were correct that some concentric zonation will happen. You are correct in that. But the city actually grows in sectors. So what is the name of this model? Sector model. And the sector is developed along transport artery. ये draw करना आना चाहिए. According to the sector theory, pattern of urban land use are conditioned by the arrangement of routes radiating from the city, and they create sectoral patterns. City grows in series of wedges or corridors. दिखाई दे रहा है corridor 1, corridor 2, corridor 3. They had the advantage of writing after Burgess in the age of automobile. Do you get that? When Burgess was writing 1817 industrial revolution, did we have that automobile revolution? No. She never expected, there will be motor cars and everybody will be running and all those things. When the mobility is less, people think that the city will only expand a little bit, like a circle, it will expand. But when there are roads, yes or no? So Delhi to Mumbai, Gadkari is talking about a road which will connect Delhi Mumbai in 12 hours. True or not? By road, Delhi to Mumbai, 12 hours. So suddenly, will it not lead to ribbon conurbation happening? Will it lead to ribbon conurbation along the highway? पूरा का पूरा हो जाएगा, conurbation हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अभी अगर मैं सोचता हूँ तो दिल्ली से, you can't expect Delhi to expand almost touching the sphere of influence of Mumbai. But with that road getting connected, just 12 hours, you will find, like everything is connected. True or not? China ने यही roads करके, China ने यही roads बनाकर Tibet को capture किया, almost knocking at Arunachal Pradesh again and again, going there in Aksai Chin because of the roads. We thought that for China, all this is mountainous region. China lives only on the eastern coast of it. Remember, only 1/3 those coastal plains. But what did the roads do? They were able to give China that access that they can control Tibet. They can control the Uyghur region. They can come here knocking at Arunachal Pradesh and doing the nonsense that they're talking about. True or not? And to defend Arunachal Pradesh. Do we need infrastructure there or not? To defend that Aksai Chin belt, to be strong in that. Goldie Weg jab hum baat karte hain, highway ki baat karte hain. Do we need highways or not? Very, very important. Border roads, strategic importance. So here they are saying cities don't just expand simply outward, they expand along these sectors. तो ये मॉडल कैसा बनेगा? This you have to remember. So center में तो CBD रहेगा. Can you see number 1 is CBD? Number 2, can you see this sector? Wholesaling, light manufacturing. So industry has gone in this sector. Low class residential, the workers, can you see they will live somewhere here surrounding this industrial belt? Can you see around industrial belt? Because number 2 is industry, no? Number 4 is MIG people, middle income group. वो बोलते हैं यार ठीक है, इंडस्ट्री उधर रहने दो, हम इधर रहेंगे, यहीं पे हम अपने स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे. एंड द रिच पीपल तो पूछो ही मत, उनका अपना एक हाईवे है, इस हाईवे पे वो आते हैं जाते हैं. सर दिस इज रूपा मेड सिंपल, सेकंड पार्ट 2 का कवर पेज. यस, बिल्कुल सही कह रहे हो. अब तुमको पता चल गया उधर क्या बना हुआ है, सिटी एज रीजन. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉर सेटलमेंट ज्योग्राफी रीड रूपा मेड सिंपल. कवर पेज पे यही डायग्राम दिया हुआ है. इज एवरीवन ओके? सही पकड़े हैं, बहुत सही पकड़े हैं. आगे बढ़े. As high rent sectors develop, area between them gets filled up. Middle rent area move directly next to them, drawing on to their prestige. Low rent area fills up. ऐसा ही डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपको वहां दिखता है. तो सब में कलर में भी दिखा दिया, ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया. Now came the third set of people. This is C.D. Harris. Remember C.D. Harris? Harris and Nelson, functional classification of American town. Town population more than 10,000 people. 9 worker category. Same Uncle Harris. ठीक है. और साथ में उनके मित्र उलमैन. They looked at the concentric model. They looked at the sector model. They said वो तो सब ठीक है यार. But who said that you have only one CBD? सेंटर में CBD होता है ना. Who said that there is only one CBD? Who said? Today the cities are specialized. So city can have multiple CBDs. If they have multiple CBDs, then obviously the pattern cannot simply be what? Just concentric or just sector. In fact, they will grow differently. Just to give you an example, Delhi का center क्या है? Connaught Place, Rajiv Chowk or Connaught Place. But we have another center which is called Nehru Place. Nehru Place is another center. True or not? And then we have a South Delhi also. South Delhi में भी अलग हमारे पास center है. So South Delhi, उसके बाद cantonment area. Yes. So Delhi has multiple this thing. अगर आपको computer, laptop, IT related चीजें चाहिए, Nehru Place में मिलेगा. Rajiv Chowk has a different department altogether, and Delhi cantonment is. So can I say Delhi has got 3 centers? Sir, Mumbai, one is down south, BT and Churchgate. But do we not hear of Navi Mumbai? We hear of Navi Mumbai. We hear of another center being created as Vashi. सर मैं कभी नहीं गया सर, मेरे पास पैसा नहीं. बताया कंगना रनौत चिट्ठी, ठीक है. एंड कंगना को चिट्ठी लिख रहे हो ना, डोंट थिंक ऑफ नेशनल. वो तो तुम अपने पैसे से चले जाना, ठीक है. ट्रैवल इंडिया अभी रोड्स बना रहे हैं गडकरी जी, यू कैन गो ऑन दैट.
इंटरनेशनल के लिए राइट अ लेटर, ठीक है, अच्छे से लिखना लेटर, एंड एट सम पार्ट ऑफ द लेटर नो यूज रेड इंक, बाद में बोल देना दिस आई हैव रिटन विद माय ब्लड, बस कोई टेंशन, बाकी शील टेक केयर. Okay, so this is multiple nuclei people. So multiple nuclei people are questioning the previous ones. So they are telling us that the city has multiple centers. Concentric and sector theories have the advantage of simplicity. They are simple, but actual pattern of urban land use are generally far more complex. In 1945, can you see 17 something? Then 1930s, 1945, a less rigid model was proposed by C.D. Harris. They suggested that the land use of most of the large cities around a number of discrete centers and nuclei. तो किसी ने कहा सर हमारे यहाँ कचहरी है, अच्छी बात है, कचहरी के अलावा बताओ दूसरा पॉइंट क्या है, which is another point that you can relate to. At times university हो सकता है, at times it can be the old this thing, जैसे किसी ने कहा सौरभ ने कहा पुलिस लाइन है सर BHU हो सकता है, perfectly okay. मधुकर बोल रहा है घाट्स हो सकता है, ठीक है, 2-3 होंगे या नहीं, everyone will have some centers or not. Down south, yes, people from South India if you're listening to me, जल्दी से बताओ, can you tell me 2 centers of your city? 2 centers of your city in reality, so that we know that it is not just one center. People from west, जयपुर राजस्थान वाले जल्दी बताओ, north वाले बताओ. So civil lines, police lines can be one, that is the government one. And there can be a region which is very commercial, mall wala area, famous mall area can also be there. Yes, hill station पे जाओगे तो एक mall road आती है, mall road can be there, some club can be there, Gymkhana club can be there, true or not? So think about that. The clustering of related land use around these nuclei in the city create a cellular structure. So city has got one cell, east cell, north cell, south cell, and it is largely determined by the unique factors of site and history of that city. The multiple nuclei theory does not produce a simple model, it suggests a number of general principles. So देखने में कैसा लगता है? So where is the CBD? ये रहा CBD. So number 1 is CBD. But sir, you said there are many more CBD. अरे है ना इधर देखो. OBD. Where is OBD? Outlying business district. अच्छा CBD के साथ में अपनी light manufacturing industry will be there. Can you see that? If industry is there, we need workers. So low class worker. Can you see worker? अच्छा away from that, medium fellow lives. ये अपना स्कूल कॉलेज वाला मीडियम क्लास, मिडिल क्लास, जिनके बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईटी के लिए पढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है. वेयर आर द रिच पीपल? इधर है, रेजिडेंशियल सबर्ब, इंडस्ट्रियल सबर्ब, दे आर लिविंग टोटली आउटसाइड, बाहर रहते हैं, इनके अपने फार्म हाउस हैं. इनमें से कोई बच्चा आईआईटी के लिए नहीं पढ़ रहा है, उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनके सीबीएसई में बहुत तोड़ मार्क्स आए हैं, नो प्रॉब्लम. समटाइम्स दे आर गोइंग एंड दे गो टू देयर पापा's फैक्ट्री. यस, दे आर लर्निंग हॉर्स राइडिंग, घोड़े पे कैसे चढ़ना है वो देख रहा है वो, ऐसा ये नए नए फैशन सीख रहा है. हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, सर वो स्कूल में ना बोर्ड एग्जाम आने वाला है, पापा ने कहा मार्क्स नहीं आया तो मेरी नाक कट जाएगी. इधर वाला क्या कर रहा है, चेक काट रहा है. यस, 10 लाख रुपीस गवर्नमेंट को चैरिटी दो मेरे नाम का, सब चल रहा है. नंबर 5, हाई क्लास रेजिडेंशियल, ये भी अपना ही रिच पीपल. ये सोच रहा है कि शादी में आलिया भट्ट वाले कपड़े पहनने हैं मुझको, ट्रू और नॉट. और ये वाला नंबर 3 वाला क्या सोच रहा है, ये पुष्पा में जो उसका स्टाइल था ना, मैं भी दाढ़ी बना के अपने स्टाइल में, झुकेगा नहीं टाइप, ये झुकेगा नहीं कि ऑपरेट कर रहा है. ये वाला बेचारा सीबीएसई, आईएएस, पीसीएस, एसएससी सोच रहा है मेरे को जॉब चाहिए. ये वाला क्या कह रहा है, आलिया भट्ट का लहंगा मैं भी वही लूंगा नहीं मतलब लूंगी, मैं भी वो लेने वाली हूँ, और ये रणवीर की तरह जी रहा है. ठीक है, तो तुम लोगों को लगता है योर वर्ल्ड इज द ओनली वर्ल्ड, सबका अलग अलग है. इसको टेंशन है कि आई हैव ओनली 10 बिलियन एंड दैट फेलो हैज गॉट 20 बिलियन. ऐसा इधर कंगना रनौत को टेंशन है कि उसकी फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा उसकी मूवी की, उसको वो प्रॉब्लम है. आपको ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो मेंटल एबिलिटी है वो वीक है, मैं सीसेट कैसे पास करूंगा. इसका अभी भी पुष्पा ही चल रहा है, अपन झुकेगा नहीं, ये वाली पिएगा कि वो वाली पिएगा, काम के बाद जैसे मौका मिलेगा पिएगा. ट्रू, एवरी सिटी हैज इट्स ओन हिस्ट्री भाई. सो दे आर सेइंग रियल सिटी इज दिस सिटी, मल्टीपल न्यूक्लियस, सब जगह अलग ही मामला चल रहा है. सो व्हिच वन डू यू एग्री विद? इज दिस योर सिटी? Is this your city? Or is this your city? आपकी सिटी कौन सी? 1 2 3 कोई भी हो सकती है. Some old cities जो तरक्की नहीं कर रहे, वो अटक गए उसी जमाने में, आउट माइग्रेशन हो रहा है, वो भी हो सकता है. Is everyone okay? So that's what we are talking about. See, multiple things are there. All are correct. All have their own this thing. Can you remember these 3 models? अर्बन मॉर्फोलॉजी के मॉडल मुझे आपको बताने थे. मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल व्यूज अ सिटी एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सेंटर्स. Some activities are attracted to particular nodes. जैसे यूनिवर्सिटी के आसपास आ जाएगा बुक स्टोर, पीजी वाला आएगा, कैंटीन वाला आएगा, पिज्जेरिया आएगा कि नहीं. अब लड़का लड़की मिलेंगे तो कहीं तो बात भी करेंगे ना. ये सुनो, कॉर्नेटो कहाँ खाओगे? जब वालिया इतना देश में कॉर्नेटो सबको खिला रही है, कॉर्नेटो से सब बता रही है, तो कहीं होना भी तो चाहिए. अब तुम सड़क पे खिला रहे हो कॉर्नेटो, पिताजी ने देख लिया, वहीं से दौड़ा दौड़ा के कॉर्नेटो ना बना दिया तुम्हारा, तो ट्रू और नॉट. तो मूवी में जो दिखाते हैं, पहले
यूनिवर्सिटी जाते ही सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? पिज्जेरिया, कि केक कहाँ से लूंगा, कार्ड कहाँ से लूंगा, कॉर्नेटो कहाँ पर है। इनकम्पैटिबल लैंड यूज भी होता है, विल अवॉइड क्लस्टरिंग, तो हेवी इंडस्ट्री वर्सेस हाउसिंग क्लास, सो एवरीथिंग हैज हैपेंड। ये देखिए ऐसा दिखता है, 3D भी दिखा दिया आपको, 2D भी दिखा दिया, और आपको एहसास भी करा दिया कॉर्नेटो वाला। ठीक है सर, मैं कभी कॉलेज नहीं गया सर, मैंने कभी किसी से कॉर्नेटो ऑफर नहीं की, कोई बात नहीं, पैसे बचे तुम्हारे, खुद कॉर्नेटो खा लेना, भाई बहन को खिला दो, इट्स द सेम थिंग। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, तुम नए से चाह रहे थे, पुराने वाले भी सेम होते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग योर यंगर ब्रदर टू हैव कॉर्नेटो विद यू, इट्स गुड। छोटे भाई को खिलाओ, वो भी दुआ देगा। E11 गैलेक्टिक सिटी मॉडल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल मॉडल, डेट्रॉइट सिटी के लिए बनाया उन्होंने। यहाँ पर क्या है? सेंट्रल सिटी, सबर्ब, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल कहाँ? ये रहा शॉपिंग मॉल। आई एम श्योर तुम्हें भी अपने मोहल्ले का शॉपिंग मॉल तो पता होगा, क्योंकि यहीं पर AC चलता है, ट्रू और नॉट। यहीं पर सिनेमा भी है, तो जब उनसे मिलना होता है यहीं पर। घर में चाहे जूता चप्पल मिला, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सूट बूट बाल बहा के पहुंच जाएगा, मूवी पे भी बात करेगा। तो दिस इज द सिनेमा, दिस इटसेल्फ इज प्लेस, ठीक है। ऑफिस पार्क, सर्विस सेंटर, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स। कई लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो एयरपोर्ट पे चलो, उधर कुछ मिल जाए, ट्रू और नॉट। तो सिमिलर थिंग, अब बहुत सारे लोग हो जाएंगे। आपको कौन से याद रखने हैं? विच वंस विल यू रिमेंबर? ओनली 3। पहला क्या है? कंसेंट्रिक, दूसरा सेक्टर, थर्ड वन इज हैरिस वाला, मल्टीपल न्यूक्लियर। बट सिंस माय जॉब टू गिव यू ऑल दोस थिंग्स, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट? इसी को डाउनटाउन भी कहा जाता है, अर्बन कोर भी कहा जाता है, सेंट्रल एरिया, सिटी सेंटर। विल यू रिमेंबर दिस? यस, आपकी ट्रेन वहीं तक जाती है, मेट्रो ट्रेन इज आल्सो गोइंग ओवर देयर, दैट इज कॉल्ड CBD। इट इज द कोर ऑफ द सिटी बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ लैंड बहुत कॉस्टली होता है या नहीं होता है? प्राइम एरिया, द कॉस्टलीस्ट लैंड इज देयर। बट द गुड थिंग इज एवरी बस, एवरी रेलवे विल रीच ओवर हियर, एक्सेसिबिलिटी इज ग्रेटेस्ट ओवर हियर, सबसे ज्यादा यहीं पर होगा। इट इज ऑल्सो अलोंग द रेडियल एंड सर्कमफरेंशियल रूट। तो CBD के बारे में कैरेक्टर देने के लिए मैंने स्लाइड आपको बना दी है। रियल वर्ल्ड विजुअलाइजेशन, रियल वर्ल्ड में कैसा होता है ये हम फिर करेंगे। आई नो आप लोग एकदम सैचुरेट हो चुके हो। आज मैंने आपको बहुत कोशिश की इधर उधर की बातें करके थोड़ा सा आपको खुश रखने की। आई होप यू आर ओके। सो हम इसे एंड कर रहे हैं। मुझे पता है कनकन इसके बाद तुम जान दे दोगे, मैं नहीं चाहता कि बच्चा अनअकैडमी की क्लास करते करते सिद्ध हार गया, इट डजंट लुक गुड। समय आ गया है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। जिस जिसको केसरी करना हो केसरी कर सकते हो आफ्टर दिस, सो दैट्स ओके। अर्बन रेल्स, और जो लोग कंगना को चिट्ठी लिखने वाले हैं, start brainstorming for that. Yes, you can share that with me. If any modification, any corrections are needed, I'll do that. Trust me, if you make spelling mistakes, Sangna will not be able to catch them. Her own spellings are too good. बाकी एच सिटीज क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ा बहुत रह गया। The big syllabus part is over. I'll use them somewhere and I'll let you. So thanks a lot for coming for this extra session, and I hope we created value and we strongly finished our syllabus. Okay, see you tomorrow in the economic geography. Take good care of yourself. Good night. Bye bye.